कितना वक्त और लेंगे आप? Your Lordship, I think I'll conclude in about 1 hour. ठीक है. So, I think nothing like a break. जी. Now, I hope you had something to eat. No, I couldn't, but I think I've managed to give some water to some people. जी. Now, Your Lordship, I was just going through the process of the election, and I'll stick to only what the facts are. So what happens now, sir, the venue has been, the schedule has been announced on 29th, which is Your Lordship will see at page 7 of this paper book. And Your Lordship has already read that there was a nomination form to be received, appeal, display. The only thing that I want to say here is, in respect to this schedule, that there is no rule or regulation saying how the schedule should be. So every political party makes their own schedule. It is not like a schedule by an official body. It's like a private schedule, and this is how it's made. Now, this was, as I said, the schedule was announced, and it was all over the media. Everybody was following it. And then the question came that if the polling took place, what is important to note is lots of 2 stages. One is nomination papers have to be filed, and the second stage is if there are contesting panels, then there will be a poll. In this case, the question is not polling, because the question of venue does not become important or remain important, because in actual fact, nomination forms were only submitted by one side, and there was no contesting candidate or contesting panel. But in spite of that, if Your Lordship turns to page 12, the PTI wanted to have the venue of polling in case there was a contest in Islamabad. Problem was, and that's not on the record in terms of document, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a Shadi Hall or anything to the PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? जी. वो कहाँ पे है? वो जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे हुई एक्चुअली जो वेन्यू बना, चमगनी में आपका ऑफिस है? नहीं, रानोगढ़ जस्ट नहीं, कोई कैंट एरिया में, कोई यूनिवर्सिटी में जो ज्यादा सेफ एरियाज हैं, तो आपके गांव में है ऑफिस? जी, वहाँ है. It has been since some time now. अच्छा. जी. तो वो उसके साथ ही एक ग्राउंड है बल्कि. So we then thought to ourselves कि there are 2 options. अगर तो ये पोलिंग हुई तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो then we should have निश्तर हॉल. और अगर पोलिंग नहीं हुई और कम लोग आएंगे तो फिर हम वैसी एक गैदरिंग करेंगे near our head office, which is the ground. तो we asked for security. We requested Election Commission of Pakistan कि हम ये हमारी options हैं, आप हमें security दे दें. This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, कि आप इनको security पेशावर में फराहम करें. This is at page 12. And then Your Lordship, eventually, if Your Lordship turns to back to the schedule, चूंकि nominations होनी थी first December 23 तक, तो जो nomination जिस तरह लोग आते गए, it was all put on the media. And if Your Lordship looks at page 16, ये venue communicate किया था आपने अपना ECP को?
ईसीपी को जरूरत नहीं थी सर, वो पुलिस को किया, सिक्योरिटी मांग रहे थे। पुलिस को किया। तो पेज 13 पे लेटर लगा हुआ है ईसीपी का, उन्होंने आपसे पूछा है कि वेन्यू बता दीजिए, एक्सपेक्टेड स्टार्ट एंड कंक्लूजन टाइम बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टाफ बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बता दीजिए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको कितनी चाहिए ये बता दीजिए। जी, ये एक लेटर पेज 13 पे आप ही की पेपर बुक जी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने हमसे कहा, बताया है इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये वेन्यू है और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमने पूरे पेशावर की सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था ना, वो तो आपको जहाँ वेन्यू पे इलेक्शन करने थे वो वाली जगह की सिक्योरिटी की बात हो रही है। जी, तो वो हमने फिर सीधा डायरेक्टली, जब उन्होंने लेटर लिख दिया था आईजी को, हमने डायरेक्टली आईजी और लेटर पुलिस से, में आईजी के बाद आपको भी एक लेटर लिखा है जिसमें ये उसका हमने जवाब नहीं दिया, नियाजुल्लाह साहब के नाम पे है और ये 30 उसका हमने राइटिंग में जवाब नहीं दिया। 23 का लेटर है ये, इसका जवाब लगा हुआ है इसमें। जी, इस उस पे जो 30th वाला लेटर है सर, वो ये जो लेटर आया था हमें, इसका राइटिंग में जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारी उनके साथ डिस्कशन होती रही टेलीफोनिकली, एंड वी सेड, उसके बाद हमने पुलिस ने विजिट किया सर द साइट, और ये फिर एट पेज 16 योर लॉर्डशिप विल सी कि in all the newspapers actually published it. PTI इंट्रा-पार्टी पेज 16, PTI इंट्रा-पार्टी इंतखाबात पेशावर में PTI ने इंट्रा-पार्टी इंतखाबात के लिए जगह का तयन हो गया है। पेशावर इंट्रा-पार्टी इलेक्शन रानू घड़ी में आज होंगे। So that was also, the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. अब जब ये फर्स्ट का डेट खत्म हो गई सर, इवन ये जो थे, हमने नेक्स्ट पेज पे पेज 19 पे आप देखें कि अकबर एस बाबर साहब भी जो हैं वो भी आए, और वो जिस वक्त आए उस वक्त तक नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो चुका हुआ था। अगर आप पीछे क्लॉक देखें पेज 19 पे तो आपको नजर आएगा कि वो टाइम उनका गुजर गया हुआ है। टाइम जो था वो 3 बजे का था, बट इन एनी केस ही वाज अलाउड इन टू कम इनटू द ऑफिस, so he could have, if he had a panel, he could have contested it. आज तक उन्होंने अपना पैनल नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया आपके सामने कि जी मेरा ये पैनल है और ये मैं पैनल से कंटेस्ट करना चाहता था और मुझे ये कंटेस्ट नहीं करने दिया। कौन सा पैनल सेंटर से करना चाह रहे थे, वो प्रोविंस से करना चाह रहे थे, उन्होंने ना एप्लीकेशन में दिया, ना उन्होंने आपके सामने कहा कि मैं ये करना चाह रहा हूं। लेकिन अगर वो करना चाहते, उनके पास पैनल होता, तो वी हैड नो ऑब्जेक्शन, वी वुड सर्टनली, वी वर रेडी कि वो कर लें इलेक्शन, एंड वी वुड हैव हेल्ड द इलेक्शन अगर वो आते नॉमिनेशन पेपर लेके। पैनल की बात किधर है? कॉन्स्टिट्यूशन में सर, आई विल रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पेज पे कॉन्स्टिट्यूशन पेज 140 जी, item 5, last election of chairman, and अगर आप 5.2.2 पे आ जाएं सर, सीधा नेक्स्ट पेज पे 5.2.2 पे नेक्स्ट पेज पे, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings, as given in the relevant clauses. So, your lordship, I'm going to pass. आम एक शख्स नहीं लड़ सकता इलेक्शन? नहीं सिर्फ चेयरमैन के। क्यों? कहीं लिखा है ये?
सर पैनल है ना जी, नहीं कहीं लिखा हुआ है ये बात? सर वो उसमें सिंगल को है ही नहीं. I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify कि individual कर सकता है. पैनल कहीं इसका एक्सप्लेन किया गया है? कहाँ एक्सप्लेन? नहीं सर, हाँ एक्सप्लेन नहीं किया जी. ये 5.1.1 भी पढ़ लें. जी. Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be. ये किधर हुआ? ये वाला इलेक्शन कहाँ हुआ है? ये भी उधर ही हुआ सर. ये भी नॉमिनेशन पेपर. इधर तो पैनल का कॉन्सेप्ट नहीं. इधर नहीं है. So there are two. नहीं तो एक शख्स ने भी वोट नहीं कास्ट किया. नहीं सर, nobody came and opposed him. इनके भी नॉमिनेशन पेपर्स अगर आप देखें तो नॉमिनेशन पेपर्स इनके भी ये जो हैं, if your lordship turns to page 17, yes, page 17. नहीं, दो अलग अलग बातें हैं ना जी. ये बात तस्लीम अगर हम कर लें कि एक ही नॉमिनेशन पेपर आया फॉर चेयरमैन जी, मगर फिर भी वोट तो कास्ट करना है. इसमें लिखा है द चेयरमैन ऑफ द पार्टी शैल बी इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट सीक्रेट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स. तो फिर इनको भी वोट तो कास्ट फिर भी करना है. बेशक इनका मुखालिफ कोई ना हो, मगर हो सकता है इनको एक वोट भी ना पड़े, तो ये मुंतखब नहीं हो सकेंगे. फिर सर वो अनकंटेस्टेड इलेक्शन होगा. नहीं, इसमें आपके अपने आइन में आप जा रहे हैं, हम आपको आइन से अपने दूर रखना चाह रहे थे. जी जी. मगर ये शिक नंबर 5.1.1 जो है जी, इसमें लिखा है कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी ब्रैकेट में लिखा है द लीडर जी, शैल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट ऑफ द मेंबर्स. जी, सीक्रेट बैलेट. जी, ठीक है, ऑन द रजिस्टर्ड डेटाबेस ऑफ पार्टी. तो इनके लिए कुछ लोगों ने डालना चाहिए था ना. अगर सर कंटेस्ट ना हो. ये कहाँ लिखा हुआ है? दिस इज नॉर्मल कॉमन सेंस, बट इन द सेंस कि अगर आप देखिए, अगर आप एक शख्स ने मफरूजा कर रहा हूँ जी, आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, एक हिसाब से नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया, राइट, ठीक है, कोई और शख्स ने नॉमिनेशन पेपर नहीं फाइल किया जी, पार्टी के एक मेंबर भी ने वोट नहीं कास्ट किया जी, शैल बी इलेक्टेड. उनको वोट तो डालना होगा फिर भी. क्या जी 1000 ने दे दिया, 50,000 ने दे दिया, 1 लाख ने दे दिया. सर इनफैक्ट मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई और कंटेस्ट नहीं कर रहा है तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे. वो देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ वोटिंग? वोटिंग तो होती है कि आई वोट टू इलेक्ट वन और द टू. सो नहीं, देखिए, वोटिंग ये भी हो सकती है मैं आपको नहीं पसंद करता, मैं वोट ही नहीं डालता हूँ, ठीक है, मगर क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं है तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है. अब आप जैसे खड़े हो गए, अब आप पे ले लेते हैं बात, क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आपकी पार्टी आपको नहीं पसंद करती. बुरा ना माने, आपकी मिसाल सिर्फ दे रहे हैं. जी जी, ठीक है. तो क्योंकि कोई और आपके खिलाफ होता तो हम उसको दे सकता था वोट, मगर क्योंकि मुझे आप पसंद नहीं है तो मैं आपको वोट नहीं देता हूँ. तो आप इलेक्ट तो नहीं होंगे, फिर भी आप ये नहीं कह सकेंगे मुझे 1 लाख वोट पड़ गए या क्या, क्योंकि इसका मतलब है हर मेंबर ने आप में नो कॉन्फिडेंस जाहिर कर दी, एक वोट भी आप नहीं सिक्योर कर सके. मतलब सर जनरल इलेक्शंस में होता है ना, उसमें भी कुछ मिनिमम वो रखते हैं, पता नहीं क्या होता है. मैं आई विल टेक ओनली खैर आगे बढ़ने सब ठीक है, बट आई विल रेफर टू सेक्शन 75 ऑफ द इलेक्शन एक्ट इटसेल्फ. आई विल रीड इट, योर लॉर्डशिप डजंट हैव टू ओपन इट, कि वहां भी लिखा हुआ है कि वेयर आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स देयर रिमेन्स ओनली वन वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट. The returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. कि ये लिखा हुआ है ना. अगर आप भी लिख देते यही चीज तो फिर बात सही थी, अगर आपने फर्क दिखाया, आपने लिखा शैल बी इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट सीक्रेट वोट्स. बट आई मीन आपको कास्ट करो भाई, कोई भी ना हो, आप मुझ में अपनी वो कॉन्फिडेंस दिखाएं या ना दिखाएं. सपोज एक वोट नहीं पड़ता, फिर आपको दोबारा इलेक्शन कराना होता.
या सपोज 10 वोट पर आपकी मेंबरशिप के 8.5, जैसे आप कहते हैं 8.5 लाख हैं, सिर्फ 10 वोट पड़ते तो उनका इखलाकी जवाज नहीं होता कि वो चेयरमैन रहते। आपको सिर्फ 10 वोट पड़े 8.5 में से, लाख में से, तो अगर मैं लड़ रहा होता तो मैं कहता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है मेंबरान का मुझ पे, आप दोबारा इलेक्शन करवा लीजिए। My reading of this constitution with due respect is slightly different. I would say कि अगर नहीं इलेक्शन हुआ तो he would still be elected although uncontested. तो मतलब ये हुआ ना, फिर आप जा रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ कि एक आदमी कह दे यार ये पैनल वो पैनल खत्म। तो ये देखें, फिर ये मुझे अजीब सी बात लग रही है ना, डायरेक्शन पे लोग खड़े होते हैं प्रोबेबली। फिर आप देखिए, अब आपके से ताल्लुकात किसी के अच्छे हैं, आपने एक पैनल बना लिया, ओ जी अली जफर साहब बहुत जबरदस्त हैं ये वो वगैरह, आपने कहा ये बस ये जी इलेक्शन हो गए, गौर साहब भी उन्हें दूसरा बना लिया, उन्होंने कहा हम आपस में तकसीम कर लेंगे सारे, तो वो जमहूरियत तो नहीं हुई। फिर सॉरी बुरा ना माने, नहीं आपकी भाई आप भी इलेक्शन देखें, आप इलेक्शन लड़े सेनेट का, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है जी, इनडायरेक्ट है, मगर फिर भी आपको एक नंबर ऑफ वोट सिक्योर करना होता है। अगर आपको एक वोट भी ना पड़े तो आप सेनेटर तो नहीं बन सकते थे। वैसे टू बी ऑनेस्ट आई वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, सो आई एक्चुअली क्या मतलब मिनिस्टर के लिए मुझे नहीं, वो आपके इतने वोट होते हैं ना सेनेटर के लिए। सर ऑन द टेक्नोक्रेट सीट्स देयर वर 2 सीट्स। अच्छा, टेक्नोक्रेट का अलग है, लोग थे, मैं और एक तारड़ साहब। अच्छा, आई डिड नॉट नो कि टेक्नोक्रेट का अलग है सिस्टम। उस पे उन्होंने सेक्रेटरी जनरल भी बाय इलेक्शन आते हैं, सो वो मैं अगर आपकी बात मानूं मैं तो आई एम ऑल्सो सॉरी मैं आपका कोई जातियात पे नहीं जाना चाह रहा था, मैं सिर्फ बात को समझने के लिए वजाहत कर रहा था। नहीं मगर एक बात देखें, सेक्रेटरी जनरल भी ऐसे आ गए, चेयरमैन भी ऐसे आ गए, सारा पूरा बोर्ड भी ऐसे आ गया, तो फिर तो इलेक्शन तो नहीं हुआ ना। फिर ये सिलेक्शन भी मतलब क्या सोचेंगे, सिलेक्शन हो गया क्या हो गया। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट अस लुक एट, आई जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बात की एट पेज 315, अगर आप आ जाए तो वैसे क्यों नहीं किया आपने इलेक्शन, मतलब मसला क्या था? ये तो कब से वो कह रहे करो 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 बाप करा दो, क्यों नहीं किया? आज बाबा साहब आप भी लड़ लो इलेक्शन, देख लो आप कितने मकबूल हो। पहले किया सर जून में, वो फिर खत्म हो गया। नहीं, वहां भी यही उनका इशू था ना कि आप एक्चुअल नहीं करा रहे, भाई लाओ बच्चा चलाओ भाई, खड़े हो जाओ। बात आपकी सही है कि अपने लिए आप देखिए, ये मसले आपने अपने लिए खड़े किए। हो सकता है आप लोग आपके मुखालिफिन इस बात का फायदा उठा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो। फिर ये देखिए इंटरेस्टिंगली कि लेट अस लुक एट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पेज 315 पे जरा देखिए, 314 एंड 315 आप ये देखेंगे। अब आप देखें सर, पेपर 2 की बात कर रहे हैं जी। So your lordship will see कि they have the election commission की ही अपील है, उसमें उन्होंने PML का लिखा हुआ है, मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, एहसन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, एक्सेट्रा। The entire, they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page, नहीं आप पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉइंट में ये कह रहा हूँ कि सर अनअपोज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का एक अनअपोज यकीनन हो सकता है। अब जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं पॉलिटिकल पार्टी की, शायद वो अनअपोज आ जाएं जी, मगर ये मैं कह रहा हूँ हर एक छोटा सा पोस्ट भी अनअपोज आ रहा है। बलूचिस्तान का पता नहीं सेक्रेटरी वर्कर्स विंग का हेड, वो भी अनअपोज आ रहा है। वो 319 देख लीजिए, 319। अब यकीनन आप खड़े होते शायद आप अनअपोज आ जाते, मान लेते हम, क्योंकि भाई चले आप वाबस्तगी है, आप काम कर रहे हैं पार्टी का, लोगों ने कहा ठीक है बंदा सही है। सो इट्स नॉट अनयूजुअल। 319 देखिए सर आपकी नेक्स्ट। नहीं मगर देखिए हम उस पे तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आप कह रहे हैं, तो मैं ख्याल आपको इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट कर दूं, अवामी नेशनल पार्टी का इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। देखिए इसीलिए तो हमें आपका मंशूर तो बड़ा अच्छा लगा, मगर ये पैनल वाली बात शायद मुझे, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, मगर इलेक्शन मींस इलेक्शन, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि एएनपी को भी प्रोबेबली कोई
प्रॉब्लम था या तो उनको फाइन लगाया कुछ? उनको 20,000 का फाइन लगाया जिन्होंने, और ये कहा है कि ठीक है आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आज ही ऑर्डर आया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना बाद में करा लें, सिंबल आपको दे देते हैं, अभी फाइन कर लें। तो इट्स जस्ट कम आउट। अगर आपका मसला बहुत जमाने से चल रहा है जी। अच्छा सर, कमिंग देखिए, अब देखिए आर्टिकल 17 पार्टी फंडिंग की भी बात करता है, उसमें तो सिंबल की बात नहीं मगर पैसों की तो बात कर ली। वो तो है, वो कल हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी आप 2014 से वो इशू पे भी बात को चलने ही नहीं देते हैं आगे। मतलब देखिए अब इसमें देखिए जरा आप एक और इसमें पहलू है जो कि बहुत नाजुक पहलू है। मुल्क कौन चलाता है? मुल्क वो सियासी पार्टी चलाएगी जो मुंतखब हो जाए, ठीक है। सियासी पार्टी तो कुछ भी नहीं है ना, एक नाम है। आप कल अपनी पार्टी का नाम बदल लें तो मतलब पार्टी तो वही रहेगी ना। तो वो लोग कौन होते हैं? पब्लिक को तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये लोग पता नहीं हमारे दुश्मनों से सौदा तो नहीं कर लेंगे, कोई और मसला नहीं खड़ा करेंगे, इनका बैकग्राउंड ये है, हाँ ये मैं जाना पहचाना आदमी, चलो हम ये। बीच एक दो लोग आपस में कभी हो जाती खिंचपिच, हर पार्टी में होती है ऐसी। मतलब जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि उसमें डिस्प्यूट होता है। अब आपके दूसरे आज कल वो थे ना, हमने खोसा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं हूँ पीपल्स पार्टी में, अब मैं आपकी पार्टी में। ठीक है, वो कोई बात नहीं, होती रहती, मगर पार्टी जब तक किसी को निकाले नहीं या वो आदमी खुद छोड़ के ना चला जाए तो फिर तो उसको आप अपना माने, जब बेशक आप उसको अच्छी नजर से ना देखें या कुछ लोग पार्टी में। मगर देखिए हर आदमी वो एक ही बात करेगा तो फिर बात किसी बात पे कोई आप सुनना नहीं पसंद फरमाएंगे। अच्छा मैं कहता हूँ ये इकॉनमी यूं चले, वो सब कहेंगे जी यस सर। वो दूसरा आएगा तो मैं कहता हूँ इकॉनमी यूं चले, कहेगा जी यस सर। फिर वो कहेगा नहीं जी ऐसे नहीं, शायद ये बेहतर है, शायद वो बेहतर है, हो सकता है फिर उस पर वोटिंग हो जाए, नहीं ऐसे करना चाहिए, चलो भाई IMF से मुआहदा कर लें, IMF से नहीं मुआहदा करें भाई, चलो भाई ठीक है। तो जब हमें पब्लिक को क्या पता है, एक कागज का टुकड़ा आया, अब आप बुरा ना माने क्योंकि गौर साहब हमारे सामने खड़े हैं और कल ये मुंतखब हो गए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो आपकी पार्टी में लोग जानते हैं इनको क्या करेंगे याद करके, तो ये बातें खड़ी हो जाएगी ना। तो भाई लोगों, इट मींस डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यू रिप्रेजेंट मी, you are not represent. The question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent? ठीक है जी, ये वाली बात है। सही। आपका देखें सर, मैं तो आपकी जो माइंडसेट है उसके साथ बिल्कुल चलता हूँ। पर्सनली आई आल्सो बिलीव क्वेश्चंस, इट्स नॉट इवन अ माइंडसेट। हम मुझसे भी कभी चुपने वाले सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। आई आल्सो पर्सनली बिलीव सर कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हैज टू स्टार्ट विद ग्रास रूट्स। द टॉलरेंस प्रिंसिपल जो हमें नहीं है समझ, कोई किसी को खिलाफ बात करता है तो हम शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे अगेंस्ट है, यू विद मी और नॉट विद मी। ये जो एटीट्यूड है, वी नीड टू चेंज दैट। आपका जो अच्छी एक आपने माहौल पैदा किया है, which is the fact that you are listening to all kinds of dissensions and you move on fast with the cases. तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रिवायत है। I am arguing maybe contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak, and your lordship is responding by an argument or an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create, so I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a council. Right. I mean, I've never had in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much, and same to you. Sir, I will pass on some, just to show that we were wanting to do that election, I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If you will see white color for the center, and you will see different colors for different
provinces, and the reason was that we were ready for the election. We wanted कि अगर कल को election panel आता है, तो होते हैं, तो we would want to do it. ये तो blank है, कुछ इस पे लिखा नहीं है. These are the ballot papers. Ready. What I'm saying is that we were ready for the election if it needed to take place. मतलब आपने इस पे लिखा नहीं पैनल नंबर सो एंड सो, पैनल नंबर सो एंड सो. वो तो अगर ये आता तो वो उसी वक्त बैठ के भरते सारे. वो उस वक्त करते according to the panel. ये अगर जो येलो फॉर एग्जांपल है is one panel, one province's panel, तो वो फिर उस पे टिक करते कि किस पैनल को उन्होंने, अगर 2 होते या 3 होते फॉर एग्जांपल. ये अगर आप ये भर चुके होते तो फिर उससे जाहिर होता कि आप ये पैनल्स मौजूद थे और हो रहा था इलेक्शन. किसी नहीं, एक पैनल कोई आया नहीं, तो फिर ये इलेक्शन नहीं हुआ. नहीं, ये पैनल का मुझे कॉन्सेप्ट समझाएं क्या है जरा, फिर मैं समझ नहीं पाया अभी तक पैनल. ओके सर, पैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट अस अज्यूम कि मैं अपना बताइए. आपका मैं अपना अज्यूम कर रहा हूँ कि आई वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी. सो मेरे पास मजबूरी ये है कि मुझे एक पूरा का पूरा अपना जो लिस्ट है ऑफ माय डेप्टी, ऑफ माय फाइनेंस, ऑफ माय, ठीक है समझ गया. आपने कहा 10 लोग ये होंगे, 10 लोग, तो दूसरा जो पैनल आ गया वो भी तो फिर वही कर रहा है. होगा, वो भी 10 लेके आएगा बंदे. नहीं तो वो आपके खिलाफ लड़ेगा ना. लड़ेगा. वो कहाँ हुई कंटेस्ट? वो आया ही नहीं कोई. आपने कहा 6 पैनल थे. सिर्फ फॉर ईच फॉर सेंटर देयर इज वन पैनल. फॉर ईच प्रोविंस भी एक पैनल का कॉन्टेस्ट होता है अलग. सो केपीके का अलग कॉन्टेस्ट होगा पैनल्स का. अगर 2 आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं हुस्न इत्तेफाक है कि सूबों में और वफाक में कोहेजन थी. कोहेजन नहीं, एक सोच थी. एक सोच थी. उसको जो भी आप लफ्ज कह लें. यस, ठीक है, ओके. सो दैट इज द थिंग. अच्छा, इसके बाद से अब आ गया डेट. जिस दिन इलेक्शन होना था, वोटिंग, उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक पैनल ही था. बट नॉनदलेस वेन्यू वाज चोजन एंड अ मीटिंग डिड टेक प्लेस. एंड उस पे कोई तकरीबन 500 वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, पैनल हो गया. जस्ट टू रूल्स में हमारे एक रूल में था. नहीं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी, या तो आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है, 6 पैनल है, 6 के 6 इलेक्ट हो गए, खुदा हाफिज जाओ जी. फिर आपने इनको जहमत क्या दी सरकार को? क्या मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट, लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन, आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक. सो उसके लिए फिर हमने, एंड दैट रूल इज रूल 15 एट पेज 100. ये आपके आइन का रूल्स का, not the constitution but the rules ऑफ ECP PTI. अच्छा, बुक कहाँ है? हमारे पास है पेज 100 पे, पेज 100. जो उस रूल के मुताबिक क्योंकि लिखा हुआ है कि द फेडरल कमिश्नर शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द कंसर्न्ड पैनल और चेयरमैन एज द केस में बी टू बी नोटिफाइड एट द पोलिंग वेन्यू आफ्टर at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time. ये रूल 15 हमारा था. तो उसके लिए फिर हमने उसको प्रोसेस को जारी रखा और वेन्यू पे कोई 500-525 लोग जमा हो गए थे. ये कौन सा पेज पे आप पढ़ रहे थे? ये पेज 100 से. कौन से पार्ट में? 101 होगा, पार्ट 1. ठीक, चलो आगे बढ़े. ठीक. सो वो फिर सेकंड को ये हुआ, 2 दिसंबर 23 को अनाउंस कर दिया. द अनाउंसमेंट वाज ऑन द मीडिया and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement.
It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held. And it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. We are going back in time. 21 नहीं, लेकिन अभी जब ये इलेक्शन जैसे हो रहा इलेक्शन करा लेते भाई, अगर उस वक्त कोविड भी था और पैनल सिस्टम था आपके पास, तो फिर तो कोविड रास्ते में नहीं आ रहा है। वो पैनल हो जाते, अगर देखते आप इलेक्शन की जरूरत ही नहीं, आप भेज देते एक हाथ उनको, जी हमारे 6 पैनल थे। I wish past could be undone, लेकिन अब वो पास्ट में मैं जाने तो मैं इसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखिए इसीलिए हमने कहा हम इनको, अगर ये सब मसाइल आपके लिए अभी खड़े कर दिए होते ना इन्होंने, तो फिर तो हम इनको बहुत शक की नजर से देखते हैं कि जी आप एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। मगर अगर ये मसला वो उस वक्त से उठा रहे हैं जब आपकी हुकूमत खुद थी, या तो आप कहें ये देखें ये मेरे खिलाफ थे मेंबरान, मेरे खिलाफ, वो एक अलग बहस चढ़ जाएगी। आई एग्री, लेकिन बहरहाल इसलिए अगर आप पुराने लोगों को अपने साथ रखें ना, उनको तजुर्बा होता है। अब मैं देख रहा था ये इन्होंने फाइल किया है डॉक्यूमेंट, पता नहीं अहमद हसन साहब ने, आपने इनको कॉपी दी है? अभी जो पहला आपका मंशूर था, आप ये देखें पेज 3 पे, चेयरमैन मिस्टर हामिद खान जी, हाँ कॉपी दी। तो ये इन्होंने ये इसके मेंबरान थे हामिद खान साहब के अलावा 11। ये आपका ओरिजिनल मंशूर है जिसमें मेराज मोहम्मद खान, अब्दुल हफीज खान, सईदुल्ला खान न्याजी, महमूद मिर्जा, फारूक, अमजद मीर, डॉक्टर आरिफ अलवी, नवाबजादा मोहसिन अली खान, मिस्टर अकबर एस अहमद, फौजिया कसूरी, ख्वाजा मोहम्मद जमील, ख्वाजा मोहम्मद सलीम। ये आपके मंशूर में इनके नाम इंदराज हैं। और फिर ये मीटिंग भी जो हुई थी ये इनके दफ्तर में शायद इन्होंने बनाया होगा, क्योंकि इनकी लॉ फर्म का तस्करा है पेज 36 पे। तो कभी कभी फायदा होता है पुराने लोगों को साथ रखने का। जी आई एक्सपीरियंस। तो वो फिर शायद आपने आइन फिर बदल लिया, मेरे कुछ और था। तो कम से कम ये तो बात वाजे हो गई कि अकबर एस अहमद साहब थे बानियों में से। Not for the record, I have the original bound copies and original letters also. नहीं फिर वो तो ने मान लिए तस्लीम। क्या कोई और लेटर है? जो मैंने कॉपी लगाई है, ये तस्लीम नहीं की हमारे में। और ये जो ओरिजिनल बाउंड कॉस्ट। आप ये कह रहे हैं कि कल रात को मैंने नहीं छापा है? ऐसे ही, we don't doubt that. तो पहले ही दिन अगर ये देखिए खान साहब ने तो बड़ी फ्रैंकली कह दिया जी ही इज फाउंडिंग मेंबर। अब इनको जो छुट्टी की वो दिखा दें हमें। देखिए आप कह रहे हैं मेंबर नहीं रहे आपके, अब बर्डन तो आप पे आ गया ना। वो या तो इनका रेजिग्नेशन लेटर दिखा दीजिए हमें, या इनका दिखा दीजिए क्या एक अखबार की कटिंग हमें ना दिखाइए। नहीं सर वो तो आपने को देखा, मैं आपसे कल से कह रहे थे, तो ये कोई गैर तो नहीं आ रहा है जो आप पे हमला कर रहा है, ये तो आपके अपने लोग हैं जो आपको कह रहे हैं जी इलेक्शन तो कर लो जी। शायद ये बनना चाहें चेयरमैन, आई डोंट नो। वैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हामिद खान साहब का ज्यादा हक है चेयरमैन बनने का या गौर साहब का? नहीं आपसे नहीं पूछूंगा खान साहब, आपसे नहीं पूछूंगा। और हामिद खान साहब मुझे आप पता आप क्या कहोगे, आप कहेंगे उनका है। हाँ ऑफर हुई थी लेकिन शायद उनका यही आई थिंक सही कह रही हैं। और आप कुछ ना कहें। हाँ मेरी भी ये ऐसी ऑन लाइटर नोट, बुरा ना माने, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा बिफोर आई सो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना जी, उनमें भी कुछ लोग होते हैं वो परिंदों की तरह होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी पार मारे उसके साथ चल पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खड़े रहते हैं, मुसीबत अच्छे वक्त में भी होते हैं बुरे वक्त में भी होते हैं, तो फिर उनकी कदर बढ़ती है, अवाम में भी बढ़ती है। हर पार्टी में ऐसे ही लोग हैं, हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये इधर आज यहाँ से टिकट ले लिया, यहाँ से नहीं मिला दूसरे में चले गए भाई, तो फिर आपका कोई वो नजरिया क्या है, आपका सूल क्या रहा?
तो नाम भी शायद रखा हुआ है। नहीं वो मतलब वो उस किस्म के लोगों के लिए। चले कोई अगर पार्टी उस पे हो ना सरकार में फिर छोड़ो तो देखिए ये भी हर पार्टी आप बार बार ये कह रहे हैं ना, हर पार्टी के साथ जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में वो तो सब एक खुली किताब है, तो वो हर पे बहुत कुछ गुजर चुका है, तो कुछ नहीं गुजरा है शायद, तो पार्टीज ऐसी नहीं थी जो बहुत बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी पार्टीज होती हैं उनको कोई परवाह नहीं करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या करते हैं वो लोग। सो ये सैड हिस्ट्री है, मगर अगर अगर हम थोड़ा भी सही करने लगे ना तो अच्छी बात। बेस्ट थिंग दैट योर लॉर्डशिप डिड वाज ये 8 फरवरी वाला इलेक्शन का। अभी इंशाल्लाह एट लीस्ट वी आर गोइंग दैट वे। यू कैन टेक क्रेडिट फॉर दैट। नहीं, आई कांट, बट I'll continue to support it as much as I possibly can, because I think that may change the course of our history. और देखिए इलेक्शंस ऑन एंड ऑफ ऑल जी, आते रहते हैं जाते रहते हैं, मतलब हु नोज व्हाट हैपेंस टुमारो जी। आई कांट से इफ आई विल बी अलाइव टुमारो, आई कैन से इंशाल्लाह। चले अच्छा, now so basically sir, coming so I have tried to नहीं ये बात समझ गए, अगला पॉइंट बताएं। Now sir, coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So sir, as I was submitting that in my humble opinion, Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. अच्छा। Funding is different because under Article 17(3). नहीं तो इलेक्शन एक्ट में तो वही प्रोविजंस हैं दोनों। नहीं, 17(3) जो है सर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोवाइड्स कि सोर्स ऑफ फंड जो है नॉट टू द नो, वी टॉकिंग अबाउट जुरिसडिक्शन ऑफ ईसीपी। माय जुरिसडिक्शन इज दैट when you read 17(3), do they have jurisdiction? जी, they do. Under where? How do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3), वो तो read with Section 210. कौन फैसला तय्युन करेगा इस बात का? ये सर 210, these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme वो Court. अदालतों ने किया है ना, मगर उसमें लिखा कुछ नहीं है। लिखा है सर, तो वो लिखा आपको मिलेगा इलेक्शन एक्ट ही में मिलेगा जाकर के। नहीं लिखा है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। Every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. To whom? 2010 में To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom? सर ये लिखा है, a political party shall, क्योंकि source of funds बना रहे हैं ना, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a financial कहाँ year. से पढ़ रहे हो? To Section 210. नहीं वो आप एक्ट ही से पढ़ रहे हैं ना। जी जी, तो आइन में तो इलेक्शन कमीशन के पास ये आइन में नहीं है, तो इसी तरह तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट तो वही चलेगा इधर भी, अगर उसका भी फिर उसका भी नहीं है उसका जुरिसडिक्शन, वो भी फिर सिविल कोर्ट के पास है। लेकिन ये आप तफरीक क्यों कर रहे हैं? जी ये तो इसलिए कर रहा हूँ सर, बिकॉज ये जो है जो 210 है, दैट कम्स डायरेक्टली not in conflict with but in expressly stated in 17(2) के आपकी सोर्स ऑफ फंड्स है, और उसमें 210 में लिखा है कि आपने नहीं आप एक ऑडिटेड अकाउंट। देखिए जी, या तो आपका आईनी बहस हो कि जी इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई भी मुझे नहीं देख सकता है, वो एक अलग बहस है, वो आप मिक्सअप कर रहे हैं कि आइन क्या तकाजे हैं। हम अभी जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं। अगर किसी को इतराज है कि आप या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के फंड सही नहीं है, तो वो किस जगह दस्तक देगा? इलेक्शन कमीशन जाएगा या सिविल कोर्ट जाएगा? आपने कहा इलेक्शन कमीशन जाएगा। अगर ये बात है तो फिर यही पावर जो उनको एक कानून ने दिया है, वही पावर उनको इलेक्शन मैटर्स में इलेक्शन के मुतालिक भी दिया है। तफरीक नहीं हुई है, वो वही कानून है इलेक्शन एक्ट 2017।
तो एक आप उनको इख्तियार दे रहे हैं और एक इख्तियार उनसे आप हटा रहे हैं जी। तो ये वो या मैं तो इसलिए कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि कोई भी पार नहीं। Because the language of 209 and 210 are different, much different. मैं इसलिए कह रहा हूँ वो 210 से तो आप अक्सर कर सकते हैं कि ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं जो कमीशन को सबमिट करने हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स सोर्स ऑफ फंड्स मस्ट शो। नहीं वो तो एक दो अलग चीजें, दो अलग जुरिडिक्शन की और आइन की बात है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं फिर। Now, so your lordship will see that if your lordship turns to the Election Act itself, your lordship will see that there are various provisions in the Election Act where although Election Commission has been given jurisdiction under the Constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the Election Act that the election dispute itself will be decided by election tribunal. I refer to section 134. ये वाला लैंग्वेज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। If your lordship turns to section 139, turn of election 139, huh? 139, election disputes, chapter 9. So these are post-election disputes. Correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141, there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss and determine whether there is a election dispute, void है नहीं है, क्या irregularity है, पूरा ट्रायल का प्रोसेस डिटेल्ड दिया हुआ है। And if your lordship turns to section 1546, तो उसमें बकायदा दिया हुआ है कि क्या क्या grounds हैं in which election can be declared void. And then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So पूरा 10A का आर्टिकल 10A का प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है कि not impliedly, it is very expressly said कि even in general election जिसकी election commission of Pakistan has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4, the commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. उनके पास इतना इख्तियार है वो आपको झड़ से निकाल के भी बाहर फेंक सकते हैं। सर ये वो दूसरी जैसे है। उन्होंने किया है, अभी किया है उन्होंने, वो जो मुशर्रफ साहब ने पार्टी बनाई थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग या क्या, वो तो उन्होंने झड़ से निकाल के फेंक दिया उसको। वो सर 202 जो है ना सेक्शन, वो एक्चुअली टॉक्स अबाउट इनलिस्टमेंट, यानी कि इट इज बिफोर, इट इज नॉट अ पार्टी इन एग्जिस्टेंस। नहीं, इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, फेल्स टू फाइल डॉक्यूमेंट्स, बट अंडर सबसेक्शन 2 ना सर, 2 दे पढ़ लेते हैं, वो 201, 209, 210 का वहां तस्करा आ रहा है। नहीं 2 पढ़ लेते हैं सर। द 2 है कि 202 is entitled enlistment of political parties and it talks about a political party, one पढ़ता हूँ, formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so. तो 5 talks about this section 2. नहीं जी, देखिए वो तो है, वो तो उसको इनलिस्ट ही ना करे। फिर क्या अभी तक आपने पूरे नहीं किए अपने रिक्वायरमेंट, कह रहे हैं कैंसिल द इनलिस्टमेंट जी का मतलब सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। बट वो तो अगर देखें आप कल दरखास्त देते मुझे पॉलिटिकल पार्टी बना दो, उनके पता नहीं 50 रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो आप पूरा नहीं करेंगे, वो आपको देंगे नहीं, मानेंगे नहीं पॉलिटिकल पार्टी। सर अगर मैं ये मान ली, अगर हम इस पे जाए ना सिर्फ 17 को मद्देनजर रख के जी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी कहे कल को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही हो जी, वो कहे कि जी मैं नहीं जाता हूँ इलेक्शन कमीशन के पास, मैं इलेक्शन डायरेक्ट लड़ता हूँ बगैर एज अ पार्टी,
अब ये कहीं नहीं लिखा आईन में कि वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, पार्टी बनेगी, फिर वो इलेक्शन लड़ सकेगा। ये लिखा है किस जगह? ये इसी में सब 200 में। यही तो मैं कह रहा हूँ, स्टैट्यूट में लिखा है जी, आईन में नहीं। आईन में नहीं लिखा जी। तो वो कल को कोई कहे पता नहीं जो भी पार्टी बनाना चाहे। ये चैलेंज हुआ था सर बेनजीर भुट्टो केस में कि आपने क्यों हमसे रजिस्टर क्यों करा रहे हैं, ये बकायदा चैलेंज हुआ था। ये जो आप बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी में कोई इशू नहीं, एज लॉन्ग एज यू डोंट पुट रिस्ट्रिक्शंस इन द रजिस्ट्रेशन। करेक्ट, ये था। हाँ ये बात सही है। मतलब जैसे कि अब लाइसेंस भी है, कोई कहे मैं गाड़ी चलाने लगता हूँ, मैं आपसे बेहतर गाड़ी चला सकता हूँ, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा। हो सकता है उसकी बात भी सही हो, क्यों बेहतर चलाता है गाड़ी, मगर उसको फिर भी लाइसेंस एक कागज का टुकड़ा चाहिए। अब उसको इनकार अगर वो कहती मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है, मैं नहीं सीखता हूँ, वो फेल कर दे टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट, वो अलग बात है। तो देखें वो ये हर जगह दुनिया में ऐसे ही हो रहा है जी। तो ये उस हद तक तो बिल्कुल ठीक है ना। 202 अगर आप देखें, ये 5 तो अगर वो एक मैं यही बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं एक चीज का इख्तियार है, दूसरी चीज का नहीं है। 202 कह रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल बाहर फेंक सकती है जी, लेकिन ओनली फॉर 209 से, और उसकी अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। अगला प्रोविजन पढ़िए जी, उसकी आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। ठीक है सर। तो अगर ये करते हैं हमसे कि ये करें, जैसे किया अगले दिन, अब कल की बात है, वो अवामी क्या नाम है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML वालों उनको उन्होंने उठा बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया। उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। नहीं सर्टिफिकेट की बात नहीं, पूरा उसका आपका वजूद नहीं खत्म किया आपका। सर मेरा मैं वही दिखाऊंगा अभी आपको, आपने इलेक्शन क्यों नहीं करा। मैं भी वही दिखाऊंगा कि बाय टेकिंग अवे द सिंबल दे हैव एक्चुअली मेड मी डिसफंक्शनल। They have actually made me dysfunctional. I'll show you how. It may be. So they can't do indirectly. But then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. But law doesn't allow that. Inactions. Law allow नहीं करता. Law कहता है सर्टिफिकेट दे दिया तो आपको फिर हम ठीक है, आपको हम यू आर एलिजिबल। सर्टिफिकेट वाला आर्गुमेंट मुझे कोई खास पसंद नहीं है, जब मखदूम साहब भी कर रहे थे और अब आप भी कर रहे हैं, मुझे दोनों की बात कुछ मजन नहीं नजर आ रहा है। राइट। सो नाउ आई वाज जस्ट आई एम रेफरिंग टू, ये ऐसी बात है कि जी वो लॉ वकालत की नहीं, वकालत नहीं की, मगर मैं एक सर्टिफिकेट छाप दिया है। या ऐसी बात है, वो हमारे जानने वाले आपके भी होंगे, डिग्री होती है भाई, नहीं फर्क होता है, आपको जानना होता है, कॉलेज हासिल करना होती है, कागज का टुकड़ा तो नहीं होगा ना। तो वो बस देखिए, वो भी टेक्निकल चल रहे थे, हम आपको भी टेक्निकल पे नहीं जाना चाह रहे जी। टेक्निकल में आप फिर ज्यादा फंसेंगे। अवॉइड इट, आई थिंक सो। आई एम अवॉइडिंग इट सर, दैट्स व्हाई आई एम ओनली बीइंग वेरी लीगल। सो बेसिकली सर ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि 154 में फॉर एग्जांपल क्लियरली लिखा हुआ है कि 154 section 154 156, all these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. इस किस्म का सेक्शन कम से कम in the articles that we have read 208 your point is taken, it is not been specifically provided. They are saying it is, ठीक है, whether it's specifically provided, impliedly provided, चलें हम बात समझ गए आपकी। Now sir, having said that, I would like to come to my second ground, which is ke under article 17 the symbol, iski do parts hai, symbol cannot be taken away, express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. वो तो फिर political party जाती है। जी। So my submission is, Your Lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your Lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir.
So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get there. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिएगा, हम देख लेंगे जी। नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए जी। अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्सॉर्ब कर रहा हूँ जी, बिकॉज़ आई हैव हर्ड दिस आर्गुमेंट बिफोर। हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे ख्वातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे। मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा। मैं इस तरह पहली बात मैंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, नहीं, हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी। नहीं, आप ना जाइए। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस के, जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया पोर्शन, दे दीजिए आप लिस्ट। नहीं, वो वी कांट, दे वोंट टेक इट। नहीं, दे के ट्राई तो करें ना। नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर। आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, उसको आप चैलेंज करें। अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी। ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निकल जाता है in effect in my reading of the law. नहीं, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution, see, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए, वो बात अभी तक mature नहीं हुई है। वो बात होगी mature on 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it, उसमें objection लगा दें बेशक। मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है। दूसरी चीज है, each one of your candidates find a solution with the, if you give the solution now, that means we're deciding the issue. जी, but you can cover your bases by doing something to protect yourself. जी। और दूसरी चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपके जितने, you can't field the candidate, right? Because a candidate has to come under either your symbol or he is independent under any symbol. This is section 104. अगर आप, यानी just to understand the scheme of things, कि what is a common symbol? Common symbol means, your lordship, क्या मतलब आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं? पार्टी नहीं लड़ सकती। मैं ये कहाँ से आपको मिल रही बात? सर, ये इस तरह है कि अगर आप सेक्शन 67(3) देखें, that is why I'm saying this is a huge. नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ जी, section 67(3). ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुझे सिंबल नहीं चाहिए, मेरा नाम ही काफी है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकती। क्यों? Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. ये आप अपने लिए मसले क्यों खड़े कर रहे हैं या इनको आइडियाज क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये पता है इनको सर, this is why this is happening. They are fully aware of how to keep a political party out of the political arena. पूछ लेते हैं मखदूम साहब आपके से। कैंडिडेट्स को सिंबल क्या देंगे फिर वो? कुछ नहीं देंगे सर, कोई छड़ी होगा, कोई झाड़ू होगा, कोई फुटबॉल होगा। वो आपकी मर्जी, जो लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, आपको मुझे जल्दी चाहिए। नहीं सर, अगर दे देंगे कैंडिडेट तो मैं मखदूम साहब को बुलाएं। इस पे क्या आपकी राय है? Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. My lord, there is. Are you stopping them from contesting elections? Not that only the only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard to withdrawing simple statement दीजिए. Are you stopping them from contesting elections? My lord, these are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are comments. They can contest elections. They can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। If PTI can field candidates under their symbol, नहीं, सिंबल तो इन्होंने वो अलग बात है, मगर कह रहे हैं आपको इलेक्शंस हम नहीं रोक रहे, हम लड़े इलेक्शन। How will the party fight the election? In the air तो नहीं हो सकता ना सर? क्या? We can't fight election in the air ना सर। इलेक्शन हमारा कैंडिडेट जो होगा वो क्या आपके अपने चेयरमैन की स्टेटमेंट है कई दफा ये प्रेस में कि कोई भी सिंबल, कोई दे दे सिंबल से चले, ये भी सही है। अच्छा, आई एम डीलिंग विद दैट आल्सो। मैंने दी एक सेकंड, ये पहली बात, आप
कल इलेक्शन लड़ना चाहें, सब जानते हैं आप किस पार्टी से हैं, ठीक है, तो आपको ये कह रहे हैं कि हम आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। नहीं, मैं लड़ सकता हूं सर, बट आई कांट फाइट एज PTI कैंडिडेट. I can't fight PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, ये देखें, these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर, अगर तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि आई एम विलिंग, आई कैन कंटेस्ट अंडर वन सिंबल, एनी सिंबल, आई एम विलिंग टू विथड्रॉ दिस पिटीशन. They have given the statement that you can contest elections. How, where is he saying that? नहीं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ें. मैं लड़ सकता हूँ, बट नॉट PTI. यही तो मसला चल रहा है ना. Who is PTI? PTI is a political party. ओहो, PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose जी. कल 10 कोई और पॉलिटिकल पार्टी वाले जाके कब्जा कर लें PTI पे, बन जाएंगे PTI. वो सिर्फ असली बात ये है क्या इसका वजूद? सिर्फ मैं ये सवाल हमारे सामने. PTI जो भी है, एक्स पार्टी कर लें आप. Let's talk about abstract law. एक्स पार्टी, किसी ने जाके कब्जा कर लिया उस पार्टी पे. एक्स पार्टी जो भी है, पार्टी, एक्स पार्टी wants to contest election as a party. So it cannot field a candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong. ये आप ये सारी मफरूजों पे हम जा रहे हैं. नहीं सर, नहीं लिखा है. इलेक्शन, आपके नॉमिनेशन पेपर जिसके एक्सेप्ट होगा इलेक्शन लड़ सकता है. सर, but under what? As independent ना सर. नेचुरली. हाँ जी, वही है सारा. बट डजंट मीन अगर वो पार्टी छोड़ दे तो अलग है. सिर्फ वो देखिए ना, अब वो पार्टी छोड़ दे या उसके साथ वाबस्तगी आपका शायद उस पर कंट्रोल खत्म हो जाए, ये हो सकता है. आप कह सकते हैं कि जी अब मेरे पार्टी डिसिप्लिन के तहत नहीं आएगा, जैसे कि आपने देख लिया बराबर में क्या हुआ. सर देखिए, आपने जो पार्टी हेड को खत्म किया इधर, आई थिंक देखिए जी, अब अपना जमाना भी याद थोड़ा कर लें जी. एक पार्टी थी, पार्टी हेड गया, आपने सिक्योर कर ली कोई चीज जी जी, और अगले दिन वो साहब कैसा रेजोल्यूशन लिया है जी, क्योंकि वो किसी डिसिप्लिन के ताबे नहीं थे जी. उसका देखा आपने, मगर आप उसके बाद नहीं बात करते हैं उनके मुतालिक बातें. ठीक है, ये अभी आप इसको अपने लिए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हैं? हमारे पास जो बात है हम उसका तयन. Sir, this is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. समझ नहीं आ रहा है. I don't know. Sir, होगा ये कि let us जाएगा, कैंडिडेट जाएगा कि मैं इस पार्टी का हूँ, सबको पता होगा. नहीं, पता नहीं होगा, सबको पता होगा. वो तो आएगा, एक कैंडिडेट आएगा, let us say MNA आएगा एक छड़ी पे, उसके पास सिंबल इंडिपेंडेंट छड़ी का होगा. जी, आगे बढ़ते हैं. ये देखें, Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that. High Court have not said that. So if we are going to, we can't say these things. हर कैंडिडेट को एक अलग किस्म का सिंबल मिलेगा. जी, अलग मिलेगा. हाँ. अच्छा, अब अलग मिलेगा तो लेट्स से कि MNA है, उसके पास छड़ी है, उसके नीचे पीपल, ये we are going on speculative. This is what it is. It is not. It is a fact. 67(3). आप पूछ लीजिए उनसे, इलेक्शन कमीशन के बंदे को बुला लें. मगर ये बातें आपने कहाँ की हैं? ये इम्प्यून जजमेंट में इसका कुछ तस्करा नहीं है. इम्प्यून जजमेंट में पता नहीं है कि नहीं सर. आप मेरी पिटीशन में तो है ना. नहीं, कहाँ से हम ये ले रहे हैं, उठा रहे हैं बातें. We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying, मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए. मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं जी. सब कुछ अच्छा, सॉरी. You need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he may have कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले कले चले गए. अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है. देखिए ना, so he may have to go. Right now. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) के तहत
My submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी point हो गया. तीसरा point ये problem होता है कि your lordship remembers Article 63A, capital A, जिसमें जो आपने throughout the history of your lordships. चौधरी साहब, nothing like this should happen if it is happening. ठीक है? ठीक है? हाँ. So your lordship will see that 63A capital A, जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से कह रही है कि this is the bane of corruption in politics, कि लोग डिफेक्ट कर जाते हैं. वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A, जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप ही ने तो खत्म कराया है. उसको मजबूत किया सर. नहीं, खत्म करा दिया. खत्म हो गया था. नहीं, आपने तो आप ही की तो पिटीशन थी. मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है सर. नो, आप ही ने तो ये चीज खत्म की. जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, किसने खत्म कर दिया पार्टी एक्ट का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है. सर मेरी पिटीशन तो ये थी. अब ये तो नहीं हो सकता कि वोट आज काउंट इस नहीं हो तरफ सकते. करूंगा, कल उस तरफ चलूंगा. नहीं, मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते. आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ. मैं इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ. वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लगते वो कहाँ चले गए? वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी. निकालें वो केस. वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात. आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ. तो वो जो कल साहब लॉर्डशिप इज रेफरिंग टू व्हिच केस? वही होगा. मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर वो ठीक है. बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज something that if you take that away, my submission is कि पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है. पार्टी cannot contest the election. ये मैं कह रहा हूँ. इधर आए. And इस पे सर I now will come to that case जिसकी मैं बात कर रहा था, 5089 सुप्रीम कोर्ट. नहीं, आपको दिया. I understand. आप निकालिए केस. उनको तो नहीं देने को कहा है. जी, मेरी किताबें क्यों? जी, योर लॉर्डशिप विल सी कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पेनम्ब्रा राइट्स दैट आर अटैच्ड विद इट. Penumbra rights have been developed robustly by our courts. और जो पहला केस इस पे था, your lordship will note, was Maudud's case. Your lordship was referring to history. So the first case on this was Maulana Maudud's case. And your lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673. इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है डज नॉट जस्ट मीन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी बट फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी. दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट टू फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी. Now, your lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, your lordship can turn to page 734, or your lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद your lordship हुआ ये कि came along a bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being suppressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court
416. PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी और साथ ये भी कहा सर कि ये जो अकाउंट्स हैं, एक और भी लॉ आया सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई विल रीड फ्रॉम दिस जजमेंट बट आई एम जस्ट समराइजिंग दैट, कि उन्होंने कहा कि अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स ECP कैन वेट देम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. तो बेनजीर भुट्टो शाहिद challenge this as a political party, these provisions, and the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं. वी विल नॉट अलाउ दैट. दिस इज PLD 88 सुप्रीम कोर्ट 416. उसके इमीडिएटली बाद फिर कानून आ गया सर 88 सुप्रीम कोर्ट के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, एंड दिस इज नोन एज द सिंबल्स केस. उन्होंने कहा कि जनाब हमने, ठीक है, पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा. बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा. अब ये 88 उसको भी चैलेंज किया बेनजीर भुट्टो ने जी, एंड दैट इज 89 सुप्रीम कोर्ट व्हिच आई वांट टू रीड फ्रॉम फर्स्ट. PLD 89 Supreme Court 66. इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी, वो तो उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है इन जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना. इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी, वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें. नहीं, पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह है, और जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना. जी जी, मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ. मैं तो अभी आपको जी, आप 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 में से सुप्रीम कोर्ट 66. हाँ, If your lordship look at this case, so I would like to start reading this at page 66. Your lordship has that? हाँ, थोड़ा सा स्पीड कर दें जी. स्लो डाउन हो गया जी, your lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I'm telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right, and to take it away, you can only do so without violating it. सिंबल आपका टेक अवे नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन,
इलेक्शन कमीशन आपको सिर्फ कह रहा था कि इलेक्शन कर लें प्लीज, अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा। आपने कहा इलेक्शन तो छोड़ो, सिंबल की जंग कर लेते हैं, मतलब उनका इतराज आपके सिंबल पे बिल्कुल नहीं है। वो ना आपका सिंबल लेना चाह रहे थे, वो सिर्फ कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवा लीजिए अपनी पार्टी में, वक्त गुजर गया है बस। वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपका सिंबल ले रहे हैं, हम आपको सिंबल देंगे नहीं। मेरी उन्होंने आर्ग्यूमेंट, मगर उनका तो जहां से बात सारी शुरू हो रही है वो बार बार आपको कह रहे हैं भाई इलेक्शन हो गया, वक्त हो गया, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिंबल ले लेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा मगर सिंबल बरकरार रखो। मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है सिंबल लेने वाली, जो उन्होंने लेने की कोशिश की है, कानून इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता। करा रहे हैं ये कराया सर, कराया उन्होंने, मैं दिखाया। देखिए उनकी जो एंग्जाइटी थी इलेक्शन, वो कह रहे थे भाई इलेक्शन करा लें, खत्म। सर वो तो देखें, अब आप ये कह रहे हैं उस वक्त से आपके खिलाफ पड़े हुए हैं। मैंने इलेक्शन कराया, वो नहीं मान रहे। किधर उस इलेक्शन कराया आपने? वो आपको आई शोड द डॉक्यूमेंट्स टू योर लॉर्डशिप कि दिस इज व्हाट आई हैव। पहला वाला जो पहला किस तारीख का मई जो मैं कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट थी, वो कब आया था लेटर में? मई में। सर वो तो उन्होंने उसको कलदम करा दिया। नहीं आप बात नहीं समझ रहे ना, वो उसी की कड़ी चल रही है अभी तक। अभी तो इस वक्त टॉकिंग अबाउट द लास्ट इलेक्शन, जिसके ऊपर उन्होंने वायलेशन का सिंबल दिया। तो वो कहेंगे ना अब तो हमने सर पकड़ लिया। सर बट सर पकड़ने के लिए भी दे नीड द लॉ। अब जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिंबल, देखें फिर आप बहस कीजिए कि हम इलेक्शन ना कराएं या करें, हमारी मर्जी, आप मत हमें इंटरफेयर करो। फिर भी हमने इलेक्शन सिंबल के इख्तियार है। मैं ये कह रहा हूं कि आर्टिकल सिंबल इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट, इट कैन नॉट बी टेकन अवे थ्रू एन इम्प्लाइड। देखिए कल भी वो मखदूम साहब की हमें बात ये हम लोग सवाल उनसे कर रहे थे कि जी एक दफा इलेक्शन हो गया फिर बाकी चीजें फॉरेन प्लेस करती हैं, वो सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, देर से दिया वगैरह, सिंबल, ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको, मैं दिखा दिया। मगर बुनियादी बात पे आप चले जाएं, इलेक्शन वाली बात। इलेक्शन हो गया सर, वो मैंने आपको दिखा दिया, उसमें इरेगुलरिटी थी कि नहीं वो डिबेटेबल है। उसको अगर हम इलेक्शन हो गया की बात आप कर रहे हैं तो इलेक्शन मैंने करा दिया। क्वेश्चन इज नहीं, देखिए इस पे हमारी दो राय नहीं है। वी एग्री विद दीस जजमेंट्स, हम जानते हैं जजमेंट्स, बट दीस आर इंपॉर्टेंट। इसमें व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द लॉ, द स्कीम ऑफ द लॉ। कैन अ लॉ प्रोवाइड कि आप सिंबल ले लें, कैन इट बी इंटरप्रेटेड इन दैट वे? क्योंकि आप एक सिनेरियो देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको कहते हैं कि चले उसके 2 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वोटर्स या सपोर्टर्स हैं। अब एक शख्स आता है, वो कहता है जी मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिले, और उसकी वजह से आप कहते हैं ठीक है पूरी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सिंबल से हटा देता हूं, उसको इलेक्शन ही लड़ने देता। तो इन इफेक्ट इंपैक्ट किस पे हो रहा है? वो 9 करोड़ लोगों पे, क्योंकि वो 9 करोड़ लोग जो वोट करना चाहते हैं। यही आर्गुमेंट को उल्टा कर सकते हैं। वो ये भी बात कर सकते हैं कि जी मुझे भी नहीं मिला, 13 लोगों को भी नहीं मिला, एक नॉमिनेशन पेपर दिखा दें, एक 50,000 की जो फीस है वो दिखा दी जमा हुई, ये इलेक्शन बोगस इलेक्शन था, इलेक्शन हुआ ही नहीं, और इसके नतीजे में चंद लोगों ने 9 करोड़ लोगों पे कब्जा कर लिया। वो ये आर्गुमेंट तो मेरी बहस नहीं है ना, का आईनी बात, मेरी आर्गुमेंट इज ओनली ऑन आर्टिकल 17। तो ये तो वो भी करेंगे बात, ये आप भी करेंगे। हाँ, मेरी आर्गुमेंट इज ऑन आर्टिकल 17 सर जी। मेरी सबमिशन ये समझ गए आपकी बात। मेरा पॉइंट बताएं ना अगला। So ये point हम समझ गए, we've taken it on board, you've relied upon Benazir Bhutto case, it deals with this matter comprehensively. Correct. And उसमें खाली 2-3 चीजें पढ़ने वाली हैं सर, कि political parties get their store by the reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbol are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. The question before us would be, who is depriving a political party of its soul? ECP. Their case is you, not their case may be me. उनको enmity मेरे साथ अगर है, we are actually defranchising. आप खुद इलेक्शन करा रहे हो, फिर आप इलेक्शन सिंबल कैसे मांग रहे हो? अभी रिसेंटली आपने बड़ी एक खूबसूरत जजमेंट दी
a few days ago. I was reading a short order that your lordships passed. आपने कहा कि एक सिंगल बंदे का कंटेस्ट करने का इलेक्शन का जो राइट है, सिंगल मैन, उसकी राइट कैन नॉट बी टेकन अवे, एंड आर्टिकल 62(1)(f) आपने कहा कि वो 62(1)(f) जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ, हम इस तरह करेंगे, उसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे कि इट इज नॉन एक्सिक्यूटरी. Now there's a very positive. मेरा जजमेंट नहीं हो सकता जिसमें मैंने नॉन एस्ट इस्तेमाल किया हो. नहीं, नॉन एस्ट से नॉन एक्सिक्यूटरी, it cannot be executed. मेरा जजमेंट था. It's अभी आपने जो 62(1)(f) का दिया, शॉर्ट ऑर्डर की बात, उसकी जिस्ट जो अच्छा वो वाला 62(1)(f). ओके ठीक है जी. अभी उसके वो जजमेंट तो नहीं आया. हाँ, शॉर्ट ऑर्डर की बात. ओके मैं समझ कोई और जजमेंट जी. तो वो उसमें आई मीन दैट्स एन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल. एक बंदे के लिए भी तो यहाँ तो सर पूरी की पूरी 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जस्ट बिकॉज दे डिसलाइक मे बी PTI और just because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now, sir, so basically it is the soul of a political party, and यहाँ लिखा है कि without this it cannot function. So, in effect, what is happening here, Your Lordship, is the Supreme Court of Pakistan ने कहा कि keeping in view this situation, आपका जो ये है लॉ का लॉ जिसमें आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे, ये लॉ ही इनवैलिड है. यू हैव टू गिव द सिंबल. और इसीलिए मैं कहता हूं सर कि काइंडली इंटरप्रेट सेक्शंस 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please, उसकी वजह ये है कि आपने फंडामेंटल राइट को बचाना है. अगर आप इलेक्शन कमीशन को आज इतनी डिटेल दे देंगे कि वो किसी की अपॉइंटमेंट चैलेंज करके एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख सकती है by taking away the symbol, तो that interpretation would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is कि ये political party इजाजत, इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी डिटेल में चली जाए कि उसकी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की देख के फैसला करे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ. यस, मैं इमेजिन करता हूं बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दे रही, तो आप उसको डीलिस्ट कर दें. Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. वो जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था, जी, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 366. जी sir. You wanted and you got from this court through short order where you were well represented and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against, for the very concept, and as a consequence of it you managed to get certain results which you did not have. अभी हमें बातें करना नहीं चाहिए, मगर आप देखें ये असूल जो होते हैं ना, समटाइम्स ये आपको तंग करते हैं जब आप पावर में होते हैं. उस वक्त नजरअंदाज मत किया करें. उस वक्त आपने नजरअंदाज किया, you secured a benefit, you got your man in the chairman's seat. ठीक है? I don't know if he's standing with you or not, I don't know. You are a member of that house we're talking about. I know, and you know exactly what we're talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. ये सारे historical facts हैं सर. Historical नहीं है, तो आज की तारीख है, ये कोई पुरानी तारीख नहीं है. Correct. देखिए ना ये जो ये आप ये जो बार बार ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे उधर भी जरा देख लेते.
प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम किसी को नहीं देंगे इन द गाइज ऑफ लेवल पे। अब अभी आपको मिन्नत समाजत कर रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, बस इतनी सी बात है। मैं कह रहा हूँ वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये होगा वो होगा, हो सकता है सारे हों कॉन्सिक्वेंसेज भाई। अब एक तो वो हम क्या करें उसका, हमने तो नहीं किया ना उन्होंने किया, वो तो आपने अपने ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया इस तरह से। इनका कहना ये होगा, मैं क्या करूं अगर आप कानून पे अमल ना करें, मैं कुछ ना मैं देखता रहूं जी। तो एक तो ये होगा। देखिए देखिए पूरी बात कर लूं, धरना केस में इन्होंने आके मौकिफ लिया कॉस्मेटिक है कानून, जो बात आज आप कर रहे हैं आपने खुद उसका रिव्यू फाइल किया। हमने इनको कहा कि आप मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन का कि कॉस्मेटिक हैं, इन्होंने भी फाइल की रिव्यू, इन्होंने विड्रॉ कर ली। आप भी आए रिव्यू में, आपने भी विड्रॉ कर ली, ठीक है। तो वो बात कॉस्मेटिक तो नहीं रही फिर कानून में। अब उस वक्त की बातें हैं, लोगों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं। देखिए ये अब इलेक्शन से मुझे लगता है, अब लास्ट टाइम भी जब हो रहा था ये आपकी मुखालिफिन, अब ये आप सियासत में जा ही रहे हैं ना, आपके मुखालिफिन कह रहे थे दोबारा फ्रेश इलेक्शन करा दो, तो नहीं कराएंगे। फिर हाउस डिसॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, आप नहीं कर सकते हैं डिसॉल्व। देखिए आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उधर, पता नहीं कैसे किया सदर ने ऑन द एडवाइस। मतलब देखिए ये वो सिर्फ मांग रहे थे इलेक्शन कराने, आपने कहा नहीं कराते हैं, फिर उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन नहीं कराते, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं। भाई ये जमहूरियत है, यू विन समटाइम्स यू लूज समटाइम्स, बट प्रिंसिपल्स शुड बी सस्टेन्ड, यू कांट कीप शिफ्टिंग। भाई फ्रॉम इससे पहले अगर हम चले जाएं, वो वजूदीन साहब भाई असूलिया आदमी थे, जहां तक मुझे हम सब मानते हैं उनको, वो इलेक्शन वो आपने उनको हटा दिया। मतलब इलेक्शन का मसला क्यों है सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकी पार्टियों को क्यों नहीं है? सबको है, सिर्फ हमें शायद बहुत फेवरेट वजूदीन साहब तो आप ही ने चुना था ना उनको, हमने तो नहीं चुना था। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी बात है कि द प्रिंसिपल शुड स्टैंड द सेम whatever the situation। और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट के बाद आपकी पार्टी लाई इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम लिया है, खैर वो अलग बात है, मगर तो वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इन द पंजाब असेंबली सिचुएशन केम, द थिंग्स रिवर्स। एब्सोल्यूट पावर corrupts absolutely. You should be scared of absolute power. Yeah, absolutely, and that is why one should मेरे पास भी absolute power था, मैंने कहा नहीं, मैं मुझे छोड़ दें, हमारे दो के साथ चला जाए। I was surprised. तो absolute देखिए I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले की I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं ये तो मेरा मौका आ गया है, but your lordship। चलिए खैर कोई आगे बढ़ते हैं जी। So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 73। और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी जजमेंट है सर, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473 जी। और इस जजमेंट में दिस इज नवाज शरीफ जजमेंट। सो almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and at some point in time come paying for Article 17(3). और इस केस में भी सर अगेन बहुत एलेबरेट जजमेंट है जिसमें पेनम्बरा राइट्स का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आए सर, and that was of political justice and political rights। And वो कॉन्सेप्ट लेके आया फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि पॉलिटिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल राइट्स भी एक चीज होती है, एंड दैट हैज टू आल्सो बी रेड इनटू आर्टिकल 17। और पॉलिटिकल जस्टिस का प्रीएम्बल में जिक्र किया। So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618. And political justice की जहां बात हुई है, that is page 665.
So that is my ground number 2, Your Lordship. That please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I've done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, Your Lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना फैसल वाला केस हाँ जी बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ नहीं मैं only one point I'm quoting these cases only for one point that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको फिर वही बात है दोबारा आ गई जो शो कॉज देंगे हियरिंग करेंगे उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे वो तो नहीं वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट तो सारा इशू इतनी देर से वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे पावर दिए हैं वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं आपने किसी ने क्या चैलेंज किया है वो एक अलग इशू है सर वो मेरा पहला पॉइंट हो गया वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी हो गया बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक नो आई एम नॉट दिस इज सेकंड थर्ड पॉइंट सर दिस इज नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी इट सेज व्हाट माय पॉइंट इज दिस टाइम है 215 सबसेक्शन 5 में है उनके पास पावर है शो कॉज देना उसके बाद आपकी हियरिंग सर दैट इज फॉर नॉट गिविंग अ डॉक्यूमेंट का तो इशू या नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में उस सेक्शन को फिर मुझे नहीं करने की जरूरत मैं तो कह रहा हूँ 215 में है ही नहीं चलिए जजमेंट बताएं इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है 221 के आप 1675 जी इसका रेलेवेंट बेसिकली से इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है हाँ बता प्रिंसिपल सिर्फ ये है मैं सारी ये कोर्ट इसलिए कर रहा हूँ आई डोंट नीड टू रीड देम is that ECP is not a court of law. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. A court of law can be abolished by law. A statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this कि the intra-party election is a civil dispute. Article 219 Constitution का इसमें power delegate होते हैं such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament. जी ये आपने पढ़ लिया. Election Act 2017 बना है वो. सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी वो आइन नहीं इस्टेब्लिश करता है वो आइन रिकग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल 175 है. I agree. तो वो मगर इन आईनी इदारा है ये हमारी तरह है सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है ठीक है ये हम इनके ऊपर नहीं हम इनके बराबर हैं मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा
आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ, I don't think so. नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ लॉ. नीचे नहीं आएगा, it will have its own jurisdiction, they'll have their own jurisdiction. नहीं, but so अपनी jurisdiction में they are kings. सपोज कल एक लेजिस्लेशन आता है, हाँ जी, वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख जुरिस्डिक्शन करते रहते हैं ना जी, चेंज करते रहते हैं. मतलब कोई चीज एक्ट ईसीपी के पावर कम नहीं कर सकता है. to the extent of general election, एक्ट to the extent of general election. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में जो आइन में आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता. हाँ, तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं जी, उसकी jurisdiction को हो सकती है मतलब नीचे. बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं. Correct. सिविल अपील, अच्छा अब रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, By law. नहीं होगी. देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं. लेकिन बाय लॉ आप एसीपी को नहीं छू सकते हैं. करेक्ट. लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्रिलिमिनरी जुरिसडिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर. सो यू डोंट स्पेसिफाई. आपने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे प्रिलिमिनरी जुरिसडिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का. भाई हम सोच रहे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है. बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं. सही, तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है. So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute. और साहब that is all right. हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ है नहीं. Your Honor, there were यस नो 4 ट्रायलों में लोग आए, निकाह पूछते. भाई अभी सिचुएशन क्या है? It's a very serious. जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब Your Honor, हमें यहाँ नहीं करना है. प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ. और साहब नहीं आप यहाँ ना बात करें जी. क्या My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसी कोई information मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है. Whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ जी कोर्ट को. we want it fixed. My lord, We want it fixed. my lord, it will be. गौर साहब, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, मैं नहीं, सिर्फ we are hearing this. आपके नहीं देखिए ना, फिर आप ये आप Your Honor, अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का भाई वकील अभी हमने कहा ना, if they don't Your fix Honor, it, then we'll see. we do not have a trust. Just bear with me for a second. आप मेरी बात अली जफर साहब, Your Honor, सिर्फ आप प्लीज देखिए वो we don't want to detract. Your Honor, मैं सिर्फ Please, ये अर्ज कर please. रहा हूँ. fair trial को, which says for the determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members, let us say dispute bhi ho jaye, so in order to determine the controversy, it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And इस केस में कोई proper trial हुई भी नहीं.
ये तो समरी मैटर में, समरी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया। दे जस्ट डिसाइडेड देयर, हियरिंग हुई, क्वेश्चंस पूछे और ने कहा जी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर अपॉइंटमेंट्स। अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, हमें भी एविडेंस लाने दें, उनको भी लाने दें, एंड एक प्रॉपर ट्रायल करें इफ दे हैव द जुरिसडिक्शन, assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, कम से कम मुझे इतना बड़ी पेनल्टी दे रहे हैं, मुझे फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया। Can't be done on just one person standing up and saying कि मैं नॉमिनेशन पेपर लेने आया था, मुझे नहीं मिले, जबकि उसने पैनल भी नहीं लेके आया कोई बंदा। जी Sir, my next point was, a point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe a lot of judgments have come by now and the law is very ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी, वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी, एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का, तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते, आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चले गए, ये इसका जवाब है। जी मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी, हाँ जी सर, इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटीशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पे जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी आईसीए हुई, दैट हैज नथिंग टू डू विद पीटीआई और एनी ऑफ द पीपल हियर। वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन लाहौर आपने डिसोन भी तो नहीं किया उन लोगों को, आप मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि वो आप ही के लोग हैं, वो आपके गुजरावाला के सदर है। होगा सर, नहीं होगा, बट क्वेश्चन इज दैट आई नो कंट्रोल ओवर सो मेनी पीपल। बिल्कुल उससे ताल्लुके का इजहार करेंगे, वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरावाला का सदर है वो पीटीआई। मैं तो खुद पिटीशन को देख आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी, इंडिविजुअल ने फाइल की, पीटीआई की नहीं है ये बात। डोंट उसको आप डिसोन कर रहे हैं, वो तो उसने लिखा है। तो हम ये आपकी पेशावर वाली पिटीशन को क्यों ना तस्वर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी है, फिर वो तो पीटीआई लिखा है, उसने भी लिखा है। नहीं एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरी मैं पहले 5 मेंबर की बात कर रहा हूं। अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब जवाद हसन साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज ही नहीं किया है, वो तो कहा उन्होंने, आपने नहीं, वो जो भी पिटिशनर था, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वो भी बात की टेकन कॉग्निसेंस, तो आई डोंट वांट टू डील विद इट, ओपिनियन भी दे दिया अपना दे दिया, वो ठीक है, उनको देखें ये एक चीज करना चाहिए थी, दूसरी ठीक है, तो उन्हें दोनों चीजें कर दी। बट बेसिकली मैं उसको पॉजिटिव देखता हूँ और मैं कहता हूँ चले उसको नजरअंदाज करें 2 मिनट के लिए, मगर दूसरी जो 2 पिटीशन उसकी बात करें। जो पहला ऑर्डर था, जो पहला ऑर्डर पास किया था, वो पास किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें ये कहा था कि आप 20 दिन के अंदर, पहला इलेक्शन हमारा कलअदम करा दे दिया उन्होंने जी। हमने जिस तरह मैंने कहा फैसला किया कि हम ये तो इलेक्शन करा लेते हैं, कम से कम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, बट वी विल चैलेंज दिस ऑन द लीगल ग्राउंड्स इन लाहौर इसलिए बिकॉज वहाँ एक फुल बेंच बना हुआ है डीलिंग। हम ये नहीं कह रहे कि क्यों चैलेंज किया आपने लाहौर में, जब वो अंडर चैलेंज था लाहौर में जी, वही लिस्ट वही इशू ऑफ पेशावर कैसे ले गए जी ड्यूरिंग द सबसिस्ट, वो लिस्ट ऑफ द पेशावर वो लिस्ट नहीं लेके गए, दैट इज वेयर द रॉन्ग इंप्रेशन वाज मेड, दैट लिस्ट वाज नेवर टेकन बाय अस, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर वी चैलेंज्ड। उसके बाद हमने पेशावर में जब ये किया दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, तो ईसीपी ने हमें ये नोटिस दे दिया
कि आपका ये इलेक्शन भी हम शायद ना माने। सो हमने उसको रोकने के लिए हम चले गए पेशावर हाई कोर्ट। नहीं तो लाहौर में क्या कमी थी? सर कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं है, बट कंकरेंट जुरिसडिक्शन चला रहा है ना पुराना, कोई नया इशू तो उन्होंने नहीं खड़ा कर दिया। बट इट वाज नाउ रेलेवेंट ओनली टू दिस पर्टिकुलर, ये इसमें क्या इनको गलती नजर आई? पहले की गलती तो चले हम भुगतेंगे या उसको करेंगे बहस, इसमें क्या गलती लगाई हमने? वी वेंट टू द पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा? व्हाई? बिकॉज दैट वाज अ कंकरेंट फाइंडिंग एंड इट वाज माय चॉइस। It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So three of the petitioners, एक तो पेशावर में था और three of the petitioners जो थे वो वहाँ के ही हैं, KPK के। So बलूचिस्तान के होते तो आप बलूचिस्तान चले जाते। I don't know what I would have done, लेकिन basically that was the reason. As I'm saying. अब हुआ ये सर कि जब हम गए पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मैं ये इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकता, आप इलेक्शन कमीशन को कह दें कि आप फैसला करें एंड देन वी विल लुक एट इट। सो हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी पिटिशन। जब इलेक्शन कमीशन के पास वापस गए उन्होंने ये फैसला कर दिया, सो वी वेंट बैक टू द हाई कोर्ट अगेन। Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions, before a 5-member bench. जी it was, और बल्कि आपके आई थिंक ऑफिस ने गलत बताया आपको शायद कि it was I who sought the adjournment. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases, लेकिन हुआ ये कि वो बेंच खुद ही डिस्चार्ज हो गया। ठीक, so पेंडिंग तो है ना? पेंडिंग है। We intend to withdraw that because it has become infructuous, but that अगर जब लगता है तो we will do that, but it is not something that is connected directly with this as we speak. So वो एक just telling you, according to Mr. Mahdum Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court, and ये उनका contention ICA में था। नहीं वो other case, not this one। नहीं, हम WP उसकी बात कर रहे हैं। ये WP वो I think I don't know why। बताता हूँ आपको, 1117120223 which was clubbed with WP 332 of 2018। Sir, if my इसमें क्या इशू है? आप थे, आप इसमें if my learned friend नहीं, इसमें क्या इशू क्या है इन दो में? सर उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में, वो तो अलग हो गया जी। अब WP 1171 का बताइए। एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट, नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड, एंड आप क्योंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन। जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में जी। और एक है सर 3-4 है ना, एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं। वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर। वो आइडेंटिकल नहीं है इसके। दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन, that is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. तो chain की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop me from going to any other. Okay. The only question is whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Mahdum Ali Khan candidly conceded that it does, provided you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. Jisa Jawad Sahab ne kaha कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it is the same case.
provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ लड़ाई में शायद नंबर देखो। आगे से अब आगे आज जी क्वेश्चन so I will leave I will not then if your lordship wants I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में हैं, but if they've been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी तो then I don't want to waste the honorable No, court's he's time. not conceding. He's contesting. He's saying, if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying, but as far as the territorial jurisdiction of the कि थी कि नहीं थी, independent of the Independent तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं, So वो जो मैंने आपको बता my दिया। submission is this, on that point, I am giving the judgments only to your lordships. And it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when two courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं। एक वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका। तो मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे, वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का, या तो आप अबैंडन करें या फिर कुछ पेज बताएं। अब पूरा जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? ठीक है सर, पढ़ लेते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं। मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना, वो वाला इधर लिखा है कि दो कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें, फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं। जी How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time with the symbol issues. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ 15-20 मिनट क्या करें क्या करें मैं तो just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor, as I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD, ये वाला तो खत्म कर लेना 68। मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये, आप ना पढ़े सर बेशक, फिर छोड़ दें। मैं आपको रेलेवेंट है, मैं रेलेवेंट बात है तो वो पढ़ लेना। हाँ ठीक है सर, मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें। कौन सी? PLD 2009 CLD 1498, ये LPG एसोसिएशन केस है। ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट जी, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, that also your lordship will see, but I just wanted to read one line to ये LPG केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है। किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे नहीं, वो उसमें आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना जी, वो तो आपसे एग्री कर रहे हैं। आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए। मेरा जवाब तो सिंपल है, आपका ये कहना है कि अगर मैं कर भी दूं लिटिगेशन फिर भी मैं जा सकता हूँ, इस पे कोई मुझे प्रेसिडेंट दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि मेरा प्रोपोजिशन सुन लीजिए, बिकॉज आई थिंक मे बी आई एम नॉट दैट क्लियर। माय प्रोपोजिशन इज इफ देयर आर 2 concurrent jurisdictions of high courts
And Pakistan का system ऐसा है कि हमारी provinces हैं. ठीक ठीक. To me, each high court is a supreme court of that province. ठीक ठीक. Now, if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. I agree with you. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter, without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe say Suppose एक हाई कोर्ट में आपने पिटिशन फाइल कर दी, ठीक है, आपको स्टे चाहिए जी. अब ये इलेक्शन नहीं, एक आम बात कर रहे हैं जी. उधर से आपको स्टे नहीं मिलता है, कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई, कोई कस्टम्स ड्यूटी लग गई, कुछ भी हो गई, तो आपने कहा चलो यार मैं फला हाई कोर्ट चलता हूँ, वहां मैं स्टे ले लेता हूँ. ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे ऐसे असूल. वो तो सिर्फ देखें, या तो आप उसको डिसमिस करवाएं, विड्रॉ करवाएं, जो भी. आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, बट आई एम सेइंग जब आपने एक चीज का इंतखाब कर लिया देन फिर आप उस पे उधर से हट नहीं सकते हैं. सर बिल्कुल सही. अगर तो एक हो सकता है कि दो अलग अलग लोग, एक शख्स ने वही लेवी बलूचिस्तान में चैलेंज कर ली, उसने सिंध में कर ली, तीसरे ने लाहौर में कर ली, मगर वही शख्स तीनों जगह नहीं कर सकता है. लेकिन सर क्वेश्चन इज रियली कि इट हैज टू बी द सेम cause of action. It is very straight and very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. नहीं सर, election तो इस तरह हर election होता है सर. If I am supposing मेरे nomination papers जो हैं same nomination paper on the same ground have been rejected in Mianwali or in Islamabad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in But 3 you can't go to judgments. Peshawar from Supposing I'm Peshawar से लड़ रहा हूँ मैं, तो I'll go there. या अगर उसके सूबे में आता है तो Right? उधर जाएगा. तो territorial jurisdiction है, then question will be cause of action. Cause of action कौन सा वाला? ECP का एलिगेशन होता कि आपने बाकी तो सारे इलेक्शन सही करवा लिए, मगर ये खैबर पख्तूनख्वा वाला जो प्रोविंशियल इलेक्शन है ये सही नहीं किया, फिर भी हम कह सकते हैं. Sir, या उनका एलिगेशन होता है कि जी वो लाहौर वाला आपने सही नहीं कराया, वो लाहौर में पिटिशन है. मगर अगर सपोज ECP कल आपको नोटिस दी, आपका बिल्कुल इलेक्शन बहुत जबरदस्त हुआ, मगर आपका जो प्रोविंशियल चैप्टर है वहां के लोग खुश नहीं, उनको आपने मौका नहीं दिया, तो वो बलूचिस्तान में जाके पंजाब वाला नहीं कर सकेंगे फिर. Sir, let me put it this way. Mr. Gohar is not, he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. ये फाइल करना चाहते हैं पेशावर में. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. Then the party है sir उस केस में पेशावर वाले. तो issue है. He's a party in the Peshawar High Court. The question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that he challenged. Party. जी. Après vous, क्या है French में क्या? Après vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He is the one who got elected. He has been removed. As have other. चलिए खैर आपने ये बात हम समझ गए, मगर उनका ऑब्जेक्शन ये था. मैं objection समझ गया उनका. But my response is this: it's not the same cause of action, and there are different parties, and they are entitled to file in Peshawar, and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court, should not. जी ठीक. जी. Now, sir, moving on. 645 पे. नहीं हम अपना काम करें, आप बताएं जी. बस सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था सर, I can multitask. वो पार्टीज अगर आप देखेंगे तो वो जो 14 लोग थे जो पिटिशनर्स थे इसमें, जो कंप्लेनेंट्स थे सो कॉल्ड, वो भी पहले केस में नहीं है. जिन्होंने 14 लोगों ने फाइल की कंप्लेंट, वो भी लाहौर वाले केस में नहीं है. पिटिशनर्स भी लाहौर वाले केस में नहीं है. नहीं वो 14 वाले
पहले केस में नहीं थे। नहीं, आप तो हैं ना सर आप उनको ना पार्टी बनाओ तो क्या करें? वो फिर it will be misjoinder because they were part of the second order. चलें, So ये तो I think is a very I mean I am देखिए very ये इन्होंने पिटीशन लगाई हुई है पेज 645 पे जी उसकी पार्टी हुए कौन है सर? ये तहरीक इंसाफ थ्रू इट्स सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान। Simple. एंड नंबर 2 इज इमरान अहमद खान नियाजी। Correct. Both of them are not party. Imran Khan is not party here. देखिए ऐसे तो नहीं हो सकता, या तो उसे he has got nothing to do with the party। He is not party here in this second petition. देखिए ये तो नहीं कि आप किसी को पार्टी निकाल दो, हम लिस्ट पे जाएंगे। चलें ठीक है। तो लिस्ट पे Versus election commission. वो तो आप 6 लोगों को और पार्टी बना दें, आपके पार्टीज आर डिफरेंट। जी So we have to see the same issues raised। देखिए अब आप इसमें मांग रहे हैं डिक्लेरेशन विद रिगार्ड टू देयर ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का 23/11/2023 वाला। आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की ऑर्डर मांग रहे हैं, ठीक है? पहले वाले इलेक्शन का जो जून में हुआ। हाँ तो भाई यही इसके बाद मजे की बात ये कि वो फुल कोर्ट ने कहा कि ये आपकी पिटीशन तो इन्फ्रक्चस हो गई, आपने कहा नहीं। जी मैंने कहा बिल्कुल नहीं बिकॉज आई सेड कि इसको मैं आप उनकी बात मान लेते, कहते हैं हाँ जी इन्फ्रक्चस हो गई है, फिर इन्होंने दोबारा मेरे खिलाफ आई वांटेड टू सी अगर ये मेरा देखिए आप ये पढ़ सुन लेते हैं 657 पे when confronted with the query that since intra-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 39/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench। लर्नड बाकी रेलिवेंट नहीं है, तो ये तो आपकी अपनी इस्तिदा पे उन्होंने आपकी बात मान ली और उसके साथ लगा दिया, वही इलेक्शन का इशू है। फिर आप चले गए पेशावर। तो मैं देखें सर मैं कौन गया पेशावर? बिकॉज Umar Ayubs and all these people who went to Peshawar against whom? ECP and the 14 people in respect of what? In respect of the second election. So it is not. हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ये। अच्छा और ये जो आप अभी कर रहे थे सर, you see the thing is कि at that particular point in time I was not sure कि ये मेरा इलेक्शन सेकंड वाला माना जाएगा कि नहीं, या इसका कोई डिस्प्यूट होगा कि नहीं। I was thinking कि ये तो अब खत्म हो जाएगा and I waited to see कि वो अगर मान जाते तो फिर लाहौर ही जाते ना, लाहौर के पास क्या जुरिस्डिक्शन थी या नहीं ये बताएं। लाहौर के पास जुरिस्डिक्शन से मेरे लिहाज से बिल्कुल थी, तो फिर वहीं रहते ना आप कहते जी मैंने करा लिया, लेकिन दोबारा ये नहीं मान जुरिस्डिक्शन थी। हाँ कंकरेंट जुरिस्डिक्शन थी, नहीं वो आपने इस्तेमाल कर ली ना जुरिस्डिक्शन, ये बात सर, है। ये मुझे देखिए ये आपके पास है कि आप कहाँ जाएं। force me to go anywhere. We agree with you. Yes. But So I am not going to pending. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was entitled to go to Peshawar. Your petition tomorrow. जी. The Lahore High Court 5 judges say जी. that the election that was held by you was correct. ये तो उड़ गया इलेक्शन। नहीं अब तो सर देखें, देखिए ना, अगर मैं आपने कहा ये इलेक्शन मैंने बिल्कुल सही किया और इलेक्शन If I गलत है, persist, तो ये आपका इलेक्शन दूसरा वाला उड़ if गया। I persist with the case, आप पे नहीं है अब कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया। तो उसमें देखिए उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे उनको आपने पार्टी नहीं बनाया जी। कोर्ट कहे कि जी नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ था ईसीपी ने बिला वजह मसले खड़े किए, वो इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त था, आइन के कानून के सब के मुताबिक था, ठीक है। उसका क्या मतलब होगा, वो लोग जो वक्त इलेक्ट हुए थे वो होंगे, आप लोग कहीं नहीं होंगे, क्योंकि फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है दूसरे इलेक्शन की, खुद इलेक्शन सही हो गया, तो वो लोग भी अफेक्टेड होंगे। ये आप पिक एंड चूज कैसे कर रहे हैं? वो उन लोगों को हम तरजीह क्यों ना दें? देखिए एक सेकंड ना, आप क्यों तरजीह दें, और जो पहला इलेक्टेड जो आपके लोग हैं उनको हम क्यों ना तरजीह दें? आप अगर बहुत अच्छा हो, अगर पहली मेरी जो इलेक्शन है वो बिल्ड हो, आप फरमा रहे हैं, अगर वो वापस आ जाए, इमरान खान साहब बिकम बैक टू चेयरमैन एंड ओरिजिनल इलेक्शन कमीशन's order is set aside, I'll be the happiest man. No, it's not your, I will not be at all, that would be it's a question of law.
So that is why I'm saying that is a totally different Has he aspect. been removed as chairman? Just want to know as a fact. In fact, Election Commission issued a notice which we challenged. It says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1). You accepted the point of view. नहीं, you challenged it. तो आपने तो एक नया इलेक्शन चेयरमैन बना दिया जी, आपने तो एक नया चेयरमैन बना दिया नया बना दिया because of that. So I mean, question मुझे समझ नहीं आई. नहीं तो फिर क्या तुम चेयरमैन तो ये हो गए वो नहीं रहे अभी तो फिलहाल तो ये पोजीशन थी. फिर So that is what I'm saying. आपने बताया था ना कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. गौर साहब कहें जी मैं चेयरमैन हूँ खत्म. और साहब कह सकते हैं लेकिन नहीं आपसे नहीं पूछ रहे हैं हम नहीं देखिए कॉन्फ्लिक्ट होता है जी. लोगों का कुछ पता नहीं होता है. आज एक पार्टी में होता है कल दूसरे में होता है. कोई पता नहीं होता है किसी का. बहुत से कम लोग ऐसे जो खड़े रहते हैं अपनी पार्टियों के साथ. सपोजिंग वो खतरा हट जाए नियाजी साहब से तो वो दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे. कोई इलेक्शन तो इलेक्शन प्रोसेस होगा. इलेक्शन तो सारे इलेक्शन होगा कि नहीं एक और वो नहीं हटेंगे. वो कहते हैं कि मैं नहीं. चेयरमैन जो है जी, चेयरमैन वो सिंगल पार्ट हो सकता है. पैनल पे अगर आना चाहें तो वो फिर हैज टू बी अ पैनल. यू कांट हैव री इलेक्शन फॉर अ पैनल. तो इन दैट सिचुएशन गौहर को रिजाइन करना पड़ेगा. दैट्स राइट. If he doesn't, then he doesn't. Okay. चले. That is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination. Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties and 175 कितनी बोले? Political parties, 175 almost, and out of them not a single one के intra-party elections have been probed into like this. बल्कि चैलेंज नहीं हुए इसलिए. चले आप ये कह सकते नहीं हैं. प्रोब की बात नहीं है. आपने इलेक्शन कराया ही नहीं. यही तो बात उनकी है कि करा ले इलेक्शन भाई. प्रोब वो नहीं करेंगे. आप करा लें जिस तरीके से भी कराने करा के खत्म करें. और मैं आपको बताता हूँ सर क्यों नहीं है ये. आप चले कह रहे हैं बट मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया. इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रेसिडेंट है. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक प्रेसिडेंट है. हुमायूं अख्तर साहब के केस में इलेक्शन कमीशन डजंट मीन कि इलेक्शन कमीशन का आज एक चेयरमैन चेंज हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन चेंज हो जाती है. इलेक्शन कमीशन इज अ कंटीन्यूअस एंटिटी. इनका एक अपना से जजमेंट है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूट वाज ब्रॉट टू द इलेक्शन कमीशन. ये कौन से लॉ के तहत? बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट मैं बताने लगा हूँ. रूपा के तहत है, पुराने लॉ के तहत. चलिए वो आप नहीं मुझे पता. दैट इज नॉट द इशू. नहीं पूछ रहे हैं आपसे ये कौन सा जजमेंट है बताएं ना. वो रिपोर्टेड ये आप 853 पे आ जाए सर. कौन सी पार्टी? इसी पेपर बुक में इनकी पेपर लगाया पेपर बुक में. मैंने हाई कोर्ट के सामने लिखा था तो हमें आपने कुछ नहीं दी है बुक. मैं अभी है 853. मैं थोड़ी देर पढ़ दूं जितनी देर में आ रहा है. जी बता दीजिए. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress, the petitioner's learned counsel could not point out any provision of law
in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force, in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. This order is dated 31st October 2009. And because of this judgment, they have not touched an intra-party election of any political party. के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है 2017 के कोई चेंज नहीं इसमें। चेंज तो 215 वगैरह में तो बल्कि प्रोसीजर डाल दिया ना उन्होंने, ये तो आपसे हम पूछ रहे हैं। बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी पॉलिटिकल पार्टीज सो ये किसने फाइल की थी पिटिशन? ये हुमायूं अख्तर, ये किस पार्टी में? उस वक्त PML जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में पैसों पार्टी के अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद। सो ये तो उसका कमिश्नर का ऑर्डर है। सर कमीशन इज ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं तो इसको कोई नोटिस शोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं, आर्गुमेंट्स हुई, वसीम सजाद साहब एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट समझना चाह रहे हैं ना, क्या इशू था उनके सामने? पढ़ देता हूँ। These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Akhtas Guraya, wherein the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unlawful acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahraz and Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified, published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है? कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंटरनल डिस्प्यूट हो गया। एक पार्टी गुराया है जिन्होंने चैलेंज किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बी डिक्लेयर्ड वॉइड। नहीं, मगर ये चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर कब थे? वो एक जमाने में वो होंगे, शायद बना दिए गए होंगे उस वक्त। ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये उसको किस लॉ के तहत हुआ है? द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इसके तहत हुआ है जी। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत हुआ है। देख लें जरा प्लीज उसमें। जी जी इसके तहत हुआ जी, उसके तहत हुआ। It is. चलिए खैर, I can't follow this. जी। So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan ने अपने ऑर्डर में कहा है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इनका जो डिस्प्यूट है, मगर इधर जरा सा फर्क है। यहाँ वो कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लें, आप तस्लीम करते हैं जी हाँ इलेक्शन नहीं कराए, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। तो जरा सा ये फर्क हो गया। जब इलेक्शन कराने आप गए तो दूसरे लोग आ गए, नॉमिनेशन पेपर दें, उन्होंने कहा जी हमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं आपने करने दिया। ये उनका आपस में झगड़ा था कि इलेक्शन सही नहीं हुए। ये भी हुई है सर। हाँ, ये भी आपस में झगड़े। मेंबर्स, सो कॉल्ड मेंबर्स, जिन्हें अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि सो कॉल्ड लोग आ गए, उन्होंने कहा जी हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए। उस झगड़े की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेइंग के व्हाटएवर हैपेंड, देखिए एक होता है इसको 10 वोट नहीं पड़े, इसको 20 वोट पड़े, वो तो झगड़ा हो गया, समझ लीजिए। यहाँ तो वो भी नहीं, वो कह रहे हैं आप मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे हैं और आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है, ये आई वॉश है। पहली बात तो ये है कंटेंशन है, पहली बात तो ये है कि कंटेंशन ही है। देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट। वो एविडेंस लेके आए, बट वुड द प्रूफ नॉट बी
resting on your shoulders. They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. Nor can they establish elections were not held. They can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say, no, this is election. इसीलिए तो सर इलेक्शन पिटीशन ने ये नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हुए. उन्होंने कहा है कि इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आपके इरेगुलरिटी थी अपॉइंटमेंट ऑफ योर इलेक्शन कमीशन. बारीकियों में चले गए. तो वो इसीलिए अगर ना लिख किया होता या हमें कहते हो कि भाई आप प्रूव करें इलेक्शन, तो हम फिर लोग ले आते 500 एविडेंस में आते कि भाई देखें उस दिन वोटिंग हुई है, उस दिन वो ये प्रोसेस हुआ है. हम अपने सारे जो लोग थे रिटर्निंग ऑफिसर्स उनको ले आते कि जी वो नॉमिनेशन पेपर्स में बैठे रहे, फिर कोई आया नहीं. बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं. Lordship, next point is where's attorney? Attorney Krishna came. Attorney General is here. My lord, he is here, but he's not in uniform. Let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. My lord. Okay? Your Lordship, an issue was raised कि Mr. असद उमर जो हैं वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभी तक हैं, and Mr. Umar Ayub is not a party secretary. Mr. Asad Umar जो हैं sir, वो actually he was detained, and after his detention he came out and he came on the TV, on the national television, and he announced that I am resigning from my office. Why? He didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said, I can't continue. He does disclose in the document that you filed. जी. क्या रीजन दिया था? ठीक है, okay. So he disclosed the reason, and point being that he resigned. Now, if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign क्या, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post, and then Mr. Umar Ayub Khan was. Did he resign as a member of the party, the office holder of the party? नहीं, he as an office holder. बाद में सब वो resign किया, पार्टी भी छोड़ दी. I've been informed that he's left the party now, but so the point being, he was the star of your party. जी, Star थे ना? Yes, he was, I think. And I mean, जो भी उनको मजबूरी होगी, I don't want to go into that. उनकी मजबूरी नहीं, उन्हें वाज़े तौर पे लिख दिया क्यों मैं रिजाइन कर रहा हूँ. ठीक है. जो आपने डॉक्यूमेंट फाइल किया, unless this document is not correct. नहीं, it is. हाँ? It is correct. That is फिर उन्होंने तो रीजन दिया है. जी. उन्होंने रीजन बता दिया कि मैं इसलिए जा रहा हूँ. ठीक है. Following the events of May 9th. उन्होंने अपना रीजन दे के वो चले गए. बट ये इसीलिए हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी अ वैल्यूएबल एसेट ऑफ द नेशन. जी. तो उनको हम डिसफंक्शनल नहीं कर सकते सर. जस्ट बाय व्हाई शुड द अदर्स लीव एंड ही स्टे? हम दूसरी तरह से देख रहे हैं. जी. व्हाई शुड द अदर्स लीव एंड ही स्टे? ही मींस क्या नाम है इनका? असद उमर. असद उमर. असद उमर. Why should he not leave? Why should he stay and the others leave? ये भी हो सकता है. ये भी हो सकता है. Stayed there. नहीं, But he opted out. He opted out. He opted out. अब ये सारे मसले आप ही की पार्टी में क्यों हो रहे हैं? सर, बिकॉज आप देखें, जो हिस्ट्री देखें, पहले बाकी पार्टी किसी और ने तो कुछ नहीं कहा, किसी और ने तो नहीं कहा कि जाके करो या ना करो. कौन सी चोजन पार्टी है उस पर डिपेंड करता है. अगर आपके मुखालिफिन ने कुछ किया होता तो समझ आता है. ये तो आप इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, आपके मुखालिफिन तो आपको नहीं कह रहे ना करो. हो सकता है बहुत खुश हो इलेक्शन कराए, खुद ही इन्होंने अपने आप को मसले खड़े कर रहे हैं. फिर ये भी बात
मुखालिफिन आपको कुछ मतलब elections कराए sir. So sir, to sum up, keeping you the mind and all that. Sir, so basically I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I've quoted at the end. The fact that there is unless there's an express jurisdiction conferred on a authority, there is no implied. Number two, the fact is that Article 17 आपको मेरे से बहुत आपने किया है. Article 17 के तहत it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional अगर हो जाएगी just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate election. So मैं सिर्फ sum up कर रहा हूँ. So my therefore request would be कि also the interpretation sought कि आप इसको हमें टाइटल राइट दे दें और ट्रायल कोर्ट, दैट ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल. अगर ट्रायल कोर्ट बनना ही है तो फिर पूरी तरह आर्टिकल 10A को आप फॉलो करें and give us the chance to actually present before you the evidence and all that. ये इलेक्शन कमीशन को मैं कह रहा हूँ. And then of course there has been discrimination because nobody else has been ever challenge that. इसको आप कह सकते हैं कि दूसरा कंप्लेन नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ऑलमोस्ट सुओ मोटो किया. डिस्क्रिमिनेशन 13 पार्टी को ने यही एक्शन लिया, उनके भी खिलाफ नहीं किया सर. और वो अगर आप वो नोटिस पढ़ें जिससे आगाज किया, उसमें भी लिखा है कि हम ये सब पार्टीज को नोटिस दे रहे हैं. सर पढ़ लेते हैं सर. 21 मई की जो नोटिस है पढ़ लेते हैं. उसमें पढ़ी, उसमें मैंने कहीं मुझे मैंने पढ़ा था मैंने. जी मैंने पढ़ा, वो खोले उनका. उसमें सर आप देखेंगे कि उसमें एलिगेशन ये नहीं है कि हम आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को की इरेगुलरिटीज को देखना चाहते हैं. प्लीज लेट अस डिफरेंशिएट फॉर अ मिनट. नहीं आप जरा देख लेते हैं ना इलेक्शन की नोटिस निकालें जी. 21 मई की कहाँ गई नोटिस? अगर 21 मई की नोटिस पढ़ लेते हैं ना. मई का नोटिस है मैं आपका क्या ने पेज था बताएं. 398 पे पेज 398 है मेरा ख्याल. 398 21 में 2022 फाइनल नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ इंटर पार्टी. नहीं सर वो बात कर रहे हैं. आई थिंक जो नोटिस बाकी पार्टीज को दिए हैं मैं वो देखना चाह रहा था. जो डायरेक्टेड टू रेफर टू द कॉरेस्पॉन्डेंस रेस्टिंग ऑन द सब्जेक्ट. टाइटल देते हैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं मैं. कंडक्ट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस. जी ठीक है. अटेंशन इज ड्रॉन सो एंड सो कंडक्ट. सर अगर ना करूं मैं, लेट मी पुट इट दिस वे, मैं ना नहीं करूं अगर इलेक्शन, तो फिर तो मुझे आप पूछ लें कि जी इलेक्शन आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया. बट अगर मैं करता हूं और आप फिर भी कहते हैं कि नहीं आपने किया तो है लेकिन हम इसमें से ये गलती निकालते हैं, दैट इज वेयर माय प्रॉब्लम इज. आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है ना. जी चलें, मैं वो ये कहते हैं तो मैं उस पावर की बात कर रहा हूँ कि ये कहां से उनके पास पावर आ रही है कि वो इतनी निटी-ग्रिटी में जाएं कि एक ट्रिब्यूनल बन जाएं. एंड आई थिंक द ऑनरेबल लॉर्ड लीडरशिप विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि मैंने ना की. एक है मैंने इलेक्शन किया ही नहीं सिरे से और मैं धंधनाता फिर रहा हूं कि जी मैंने इलेक्शन नहीं कराना. चले उस सेंस में तो आपको समझ आती है कि आपको एविडेंस की भी जरूरत नहीं. आप सिंपली कहेंगे कि जी आपने क्यों नहीं कराया. बट मैंने करा लिया. आप कहते हैं कि मेरी ये गलती हुई, ये गलतियां हुई 2 3 4 10. ये कहां से पावर आ रही है मैडम टू द इलेक्शन कमीशन के वो ये गलतियों में इस तरह प्रोव करे जिस तरह के इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिया हुआ इलेक्शन एक्ट में. दिस इज वेयर आई थिंक द एंटायर केस फॉल्स डाउन. अब लास्ट पे मैं दिखाता हूं सिर्फ जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया. आई थिंक इट्स अ ग्रेट जजमेंट एंड उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है. ऑनरेबल हाई कोर्ट पेशावर ने एग्जैक्टली यही किया है. उन्होंने कहा है कि हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि इलेक्शन ठीक हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ. हमें देखने की जरूरत ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जुरिसडिक्शन थी कि नहीं. फिर ये कौन चेक करेगा? पढ़ लेते हैं सर.
will check these irregularities? अगर कुछ होती है तो कहाँ जाएगा? सिविल कोर्ट में? वही जो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहे हैं अपने ऑर्डर में, उसने कहा है कि आप जाएं सिविल कोर्ट में, ये मेंबर्स का इशू है, हमें क्यों हर पार्टी का इन्वॉल्व करें? वरना होगा क्या जी कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी, पुराने ऑर्डर की बात करें 2009 मैं जवाब दे दूं, 175 पॉलिटिकल पार्टीज में हर रोज झगड़े होंगे, हर रोज वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे, एक क्लेम करेगा जी मेरा ये वोट नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, तो वो तो एक सुपरवाइजरी रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी। चलिए जफर साहब, हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बुनियादी फर्क है। एक होता है डिटेलिंग, किसको कितने वोट पड़े, फला फला। आप कल को कह दें जी गौर साहब को 1 लाख पड़े वोट, ठीक है, बाबर साहब को 10,000 पड़े, ये तो चले आपकी बात मान ली, इलेक्शन कमिश्नर ने सर्टिफाई कर दिया। मगर यहाँ जरा सा थोड़ा सा केस फर्क है। उनका कहना है इलेक्शन हुए ही नहीं है, जो जिसको आप इलेक्शन कह रहे हैं, ये बेसिक तकाजे पूरा नहीं कर रहे इलेक्शंस के, ये फर्क है। निटी ग्रिटी में नहीं जा रहे हैं कि जी नाम अपना गलत, अगर ये कह रहे होते, शनाख्ती कार्ड नंबर गलत हो गया, ये लॉर्डशिप चले, अगर ये इलेक्शन कमीशन ये कह रही होती तो फिर भी मैं आपके सामने वो बहस करता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रही, इलेक्शन कमीशन तो कहती है कि आपने इलेक्शन करा ली है लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट्स गलत है। तो ये बहुत, अब हाई कोर्ट ने कहा है ऑब्जर्व प्रोविजन ऑफ लॉ। अब ये अगर आप कहें ना वायरीज आपके सामने है, ना आप उसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, पैराग्राफ 25 इंटरप्रिटेशन इज absurd. I still insist. पेज भी 25 I will start reading. पैरा भी 25 है और ये कंक्लूजन है। मैं पैरा 10 से शुरू करता हूं सर। The petitioners have questioned the impugned para 10, page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it we is agree 100%, we agree with this. वही तो आपके खिलाफ जा रही है बात। doesn't matter, sir. Doesn't matter. I am fine with that. में नहीं कर सकते। I am आगे जाके नहीं, I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that आप वो इंटरप्रेट करेंगे क्लॉज की, मैं अपनी पर्सनल आपको ओपिनियन दूं, आपकी पिटीशन कहाँ थी? आप वो इस तरह इंटरप्रेट करेंगे आर्टिकल इसको जो कि आर्टिकल 17 के कॉन्सोनेंस में है। एंड योर लॉर्डशिप इज नॉट गोइंग टू डिनाई अ सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी कि वो डिसफंक्शनल हो जाए। Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will not will deny. Of course, we don't want to do any such thing. Sir, 11 पढ़ दूं जी आप। Jurisdiction of this court and maintainability, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है शायद। I will leave that. हमने पढ़ तो लिया है, अगर आप कोई खास बात बताना चाहें बता दें। नहीं, इसमें छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं सर जी। अब हम आ जाते हैं, एक चीज उन्होंने डिक्लेयर नहीं की जो आपने जिसकी पेज 14। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन हुए आपके, वो कहाँ कहा इन्होंने ऑर्डर में? कोई डील ही नहीं हुआ है ना, वो एस्पेक्ट ही डील नहीं है ऑर्डर में कि वो आपके इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि दिस इज अ कोरम, दिस इज अ बियॉन्ड जुरिसडिक्शन वॉइड ऑर्डर। And I still say कि it is a void order. So election commission के पास पावर ही नहीं है कि वो मेरी इंटर पार्टी इलेक्शंस को देखे। Now let us look at 15 पैरा। Before embarking आपको अगर ये पावर ही नहीं तो आपको अपनी पिटिशन में ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई? जी, आप इलेक्शन मेरे हो गए फिर ना बात करते, वो सिंबल नहीं दे रहे थे। नहीं तो आप सिंबल बात करते ना कि मुझे सिंबल चाहिए, हमने नहीं कहा एंड में। आप पढ़िए अपनी इलेक्शन, आपकी पिटिशन पेज 33 पे आई है। मैं जरा ये पढ़ लूं ऑर्डर से, फिर मैं आपसे एक सेकंड ये पढ़ रहे हैं चूंकि आई डोंट वांट टू लीव इट इन बिटवीन, लेट मी फिनिश दिस पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case PLE 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election.
Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. Such a profound thing that we have to discover what is the 18 पे आ जाते हैं 18 पे आ जाते हैं ठीक है 18 पे I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is tried law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. ये आप दोबारा पढ़िए ये जो आपने भी पढ़ा ना बिल्कुल यही कह रही है. Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. हाँ अगला जुमला आपने पढ़ा. However, its other functions arising out of the Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. वो ब्रिज की बात नहीं वो कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कोर्ट के इलेक्शन एक्ट के तहत जो एक्सप्रेसली लिखा है वो कर रहे हैं. Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal, or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of ये सारी बातें depends jurisdiction. आप आपने बता दें. मैं पढ़ रहा हूँ सर. नहीं बता देना कहाँ लिखा है. नहीं आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए ना. जी पढ़ रहा हूँ सर. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by a writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. डिस्ट्रक्टिव हो गया यहाँ पे आके वो आप कह रहे हैं कि जुरिस्डिक्शन फैक्ट है तो अथॉरिटी कर सकता है. If it exists, इफ इट इज तो उन्होंने आपको शो कॉज देके एक्सरसाइज किया ना अपना जो 215 के अंदर. फिर वो तो अगर आप नहीं मैं सिर्फ जजमेंट किया. देखें जजमेंट के पैराग्राफ है जो आपस में कॉन्ट्ररी है टू द फाइंडिंग्स ऑफ द लर्नड जजेस. with respect it is not. डिस्ट्रक्टिव है वो. With respect it is not, sir. कर नहीं सकते कह रहे दूसरी तरफ कहने कर सकते हैं. I think the honorable judges existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honorable judges are saying, आप पढ़ लीजिए. ये कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. देखिए Once the authority has jurisdiction in the matter on existence of jurisdictional fact, हो रही है ना कोई it can decide the fact in issue or adjudicatory fact. A wrong decision on fact in issue or adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction invulnerable provided अगेंस्ट हो गया ये. चले against नहीं हुआ सर. ये law है. A wrong decision of fact in issue or an adjudicative fact would not make the decision of the authority without jurisdiction. With respect, let me say. इतना इसके अंदर तजाद है. आप देखें ना मुख्तलिफ जगहों पे 3-3 लाइनों में तजाद है. I think there is no tazad in ये बता this is the law. law कह रहे हैं law बता रहे हैं. आपने तो नहीं लिखा. ये बता दें कि इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट कहाँ ले जा सकते हैं. पढ़ते हैं सर. नहीं पढ़ते नहीं सिर्फ बता दें वो वाला जुमला बता दें कि ये सिविल कोर्ट में जाएगी मैटर. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of an election political party.
it is envisaged by section 2. आप देखें वो अब इतना टाइम तो नहीं है ना, अब जरा सिर्फ अभी बता दें वो किस जगह जाए शख्स, ये जजमेंट के चैलेंज की हुई है, इसलिए आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि इसको हम थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आप देख लें ना, आगे पीछे करना है। बिल्कुल देखें आप जी। हो सकता है मखदूम साहब से के बाद वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। जी सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं, हमें 1, 2, 3 सवाल हैं। जी पहला सवाल ये है कि इस जजमेंट में लिया था कि ये तो कॉस्मेटिक कानून है, वो सुप्रीम कोर्ट या तो आप करें मगर आप भी मान गए कॉस्मेटिक नहीं है, ये उन्होंने कहा इनके पास जुरिसडिक्शन नहीं है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, इस जजमेंट में उन्होंने ये हमें बताया कि किसके पास जुरिसडिक्शन है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये जरा देख लीजिएगा ना, कहीं उन्होंने जिक्र किया है बात का, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सरसरी तौर पे देखा है। दूसरी बात ये है कि अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए जरा। जी ये पढ़ने के बाद से कि नहीं आप पूछ लें, नहीं हम आपको आप देखिए, आप खड़े होके पढ़ लें ना, हम मखदूम साहब को सुनेंगे, फिर आप हमें जब ये पढ़ लेंगे पूरा, फिर आप नोट कर लेता हूँ सर। जी अच्छा, अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए, पेज 33 पे, जी पेपर बुक पे। जी ठीक है जी, इसका पैराग्राफ 2 पढ़िए। जी that in the impugned order, ये वाला जी, thank you. That in the impugned order, ECB has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. पढ़ते रहे। There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections. And C, the certificate as required by Section 209 of the Election Act, along with all the relevant documents, has been provided to ECB, and there is no deficiency therein. पैराग्राफ 4 पढ़ लें। According, इसको छोड़ दूं बाकी? हाँ, वो मैं आपको कुछ और बात पे ले जाऊंगा। Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, nullified, and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void and making PTI dysfunctional as a political party. The same void. जी सही है ना जी। अब अपनी प्रेयर क्लॉज में आ जाइए, आपको अब कौन सी डिक्लेरेशन सीख करना चाहिए कि माय इलेक्शंस वर गुड प्रॉपर, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, वो डिक्लेरेशन आपने कहाँ सीख किया है? आई डोंट आप चले गए स्ट्रेट अवे सिंबल पे जी, वो इलेक्शन से उठेगा ना बात। जहां तक मेरा है, अगर आपका इलेक्शन सही है तो सिंबल वगैरह सारी चीज आपको मिल जाएंगी। इलेक्शन नहीं हुआ है या अगर इतना गलत तरीके से हुआ कि उसको तस्वुर नहीं किया जाए इलेक्शन, फिर आपको एक डिक्लेरेशन तो सीख करें ना उसका। अब आप देखें, आपने जो व्यू पॉइंट नोटेड है कि मैं उसका जवाब दे देता हूँ जल्दी से। नहीं अभी देना चाहेंगे या मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट के छोड़ रहा था। ओके, मखदूम साहब के बाद आप सोच के जवाब देते हैं। ठीक है, मैं दे रहे हैं, अभी देते हैं, मैं अभी भी देता हूँ जी, मैं बाकी सोच भी लूंगा, दोनों कर लेता हूँ। चूज बोथ ऑप्शंस, कंकरेंट jurisdiction एक्सेस करते हैं। In view of the foregoing, it is respectively prayed, मैंने प्रे किया सर कि hold and declare that the impugned order is without jurisdiction. So if the impugned order is without jurisdiction, then all that is stated in it would automatically come to an end. That would be my. Don't you think a separate declaration would be sought? क्योंकि बाकी देखें, आप स्पेसिफिक्स में चले गए हैं A B C D E F, मगर जो प्राइमरी डिक्लेरेशन है, I think the most important declaration on the election, because ये इधर उधर की मीम में निकालने हम नहीं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, बुनियादी बात पे हम चल रहे हैं बस। इलेक्शन क्योंकि जमहूरियत है। या तो आप कहते हैं कि फिर वो वन पर्सन वन मैन चले, फिर फर्क ही है, फिर वो उसी तरफ से चले। वो आपके आर्गूमेंट्स हम नोट कर लेंगे जी, हमारे लीडर ये जो वो हम करेंगे, इलेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पार्टी में। ये भी आपका मौक़िफ़ हो सकता है, मगर ये आप मौक़िफ़ ले नहीं रहे। ठीक है, तो आप जब जमहूरियत चाहते हैं, इनका सारी बहस इशू सब कुछ एक नोटिस से शुरू हुआ, भाई इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें। फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी, शो कॉज नोटिस, अगर नहीं करेंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे। अदरवाइज इनके पास कोई हथियार तो नहीं है कि आपको इलेक्शन करवाएं, तो कुछ उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया।
सिर्फ आपको ये सवाल पे आप जवाब देना चाहें इसको दें या फिर ये आप इस पे देंगे? ये कंक्लूजन भी पढ़ लीजिए पेज 25 पे ना। मैं अभी 19 पे था सर। हाँ नहीं, अगर आप बाद में देखना चाहते हैं हम बाद में सुन ठीक लेंगे, एज योर कॉल। ठीक है सर, मैं आई जस्ट कंक्लूजन तो जरा पढ़े ना, इसमें क्वेश्चन है, कंक्लूजन का पढ़ लीजिए जरा, छोटा पैराग्राफ। हाँ सर, पेज 25 पैराग्राफ 19 और 20 ना पेज ना पढ़ लें सर। आप ये पढ़ लेना पहले, फिर पढ़ लीजिएगा। आप बाद में मौका देंगे, माय लॉर्ड कह रहे हैं पढ़ लें जरा जरा। प्रोविजन 25 पढ़ लेना। पूछना चाह रहा हूँ, ये किसका जिक्र कर रहे The survey of the case law stated above and the enabling provision of the Constitution as well as the Act lead us to the conclusion that it is the fundamental right of every citizen of Pakistan not only to form political party, but the political party should be provided a conducive atmosphere to contest elections for the Parliament, Provincial Assembly, Senate, and to form a government. ये सब हम agree करते हैं। आगे बढ़िए। It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of ये जंप हुआ जरा। They cannot be मेरा भी denied केस ये है on the basis of on the basis of absurd provision of law. अब absurd provision of law कौन सा? I think वो कह ये रहे हैं कि on the basis जो interpretation अगर वो based की absurd जाए- है तो उसको strike down होना चाहिए, because वायरिस तो अंडर चैलेंज It है ही नहीं। is, अगर अंदर पढ़ेंगे तो it is not the provision of law वो इसको absurd कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो interpretation आगे based upon it. आगे चलें, 3 लाइन और पढ़ लीजिए। Therefore, the impugned decision of ECP is backed by no legal provision either under the Act or under the Constitution. Therefore, the same is illegal. मेरा केस ये है। अभी सुनिए एक मिनट, पैराग्राफ 26 के अंदर उन्होंने आपकी प्रेयर जो थी शॉर्ट ऑर्डर रिप्रोड्यूस किया है। जी। पैराग्राफ रोमन 3 पेज 26 के ऊपर आप पढ़िए, जी। जो मजीद आपको डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो पढ़ें। It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217. बात तो फिर वही कह दी उन्होंने 215 में तो सारा केस चलाया आपका। वो कह रहा है अगर ये एंटाइटल है 215 और 217 में तो दे दो। तो 215 में तो पूरा केस चला आपका। नहीं, वही तो 215 में गलत चला दिया ना सर। क्या इन्होंने गलत चलाया। इन्होंने ये कहा कि आपको हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन चूंकि आपका इरेगुलर था इसलिए हम ये करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ 215 का, मैं ये कह रहा हूँ सर 215 का कि 215 is We are only not going to interpret the judgment of the Peshawar High Court being a Supreme Court. We are the appellate forum. हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्डर में है, आप खुद देखें ना, वो कह रहे हैं 215, 217 के ठीक कह रहे तहत 215 में तो पूरा केस इसीलिए मैंने कहा 19 पढ़ लेते हैं, 19 ऑनवर्ड्स पढ़ लेते हैं। 215 जब तक है, जो कि खुद हाई कोर्ट मान भी रहा है कि 215 और 217 के तहत मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि इनको सिंबल दो। जी। तो 215 के तहत तो डिनाई हुआ सिंबल आपको। सर यहाँ तो फिर तो मैं बिल्कुल आई थिंक वी हैव कम फुल सर्कल ऑफ आर्गुमेंट्स। माय फर्स्ट पॉइंट वाज अच्छा, what we do is 215 जो था सेक्शन एक सेकंड, we'll certainly continue hearing you. We'll take a short break. ठीक है, Because I want to attend to the other matter as well. राइट सर। And we will come back आधा घंटा, आधे घंटे में ठीक है सर, ठीक है। है। Additional submissions. We coming back. Okay.
Has the IG come? We've sent for the IG. Okay, that's good. Is he here? He may be coming. G. G, do you have the answers that we had asked? Gigi, I do, but very briefly, I was just going to read the paras, finish the judgment, and then answer the questions and conclude. Is there anything in judgment which court has jurisdiction? एक reference है to a case Page? at page 20 के पेज 20 पे जो पैरा 19 कोट किया हुआ है उसकी लास्ट 4-5 लाइंस पढ़ता हूँ पेज 20 ऑफ द जजमेंट. अच्छा, ये जो इंटीरिम जजमेंट की बात कर रहे हैं. जी जी. I'll leave the last five lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. Where are you reading from? ये सर एक केस कोट किया हुआ है 1999 SCMR 1921 सरदार बहादुर खान. Are you reading from the quoted portion? Quoted portion, जी. अच्छा, okay. उसकी last 4 lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. That's the only reference to civil proceedings that I have found here. ये पूरा paragraph पढ़ने, I just want to understand the context. Okay, sir. We are inclined. Can you read the whole paragraph? Yeah, I'll do that. जी. 1999 SCMR 1921 है. We are inclined to hold that if a plea is raised before the Chief Election Commissioner that the person who made reference on account of alleged defection is not the head of the political party involved, the Chief Election Commissioner is obliged to examine the bona fides of such a plea. If the person who makes the reference as the head of the political party involved has been acting as such in the past, the Chief Election Commissioner is supposed to proceed on the assumption that he is the head of the political party involved. However, in case he finds that there is no reliable material before him to conclude that factually the person who has made the reference is the head of the political party involved, and that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved, in that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. It doesn't quite attend to the query, but anyways, ठीक है. So, can I come back, Your Lordship, to para 19? I was reading that. G. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act 2017, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by Section 208 of the Election Act 2017 that the office bearer of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of political party. The said intra-party election must be conducted at least within 5 years, and where a political party fails to conduct intra-party election as per time frame in the constitution, it is liable to pay a fine which may extend to 20,000 rupees. The verbiage of Section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of Section 209 of the Election Act 2017 that a political party shall within 7 days after completion of intra-party election submit a certificate signed by office bearer authorized by the party head to the ECP to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party and the Act. The said certificate should inter alia include a date of last intra-party election, the names, designation, address of office bearers, the election result, and the copy of political party notification declaring the result of the election.
On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of the Commission to publish the said certificate on its website within 7 days. Section 209 of the Act does not confer any jurisdiction on the ECP to question the intra-party election process. Allocation of symbol to a political party. एक second जी. I don't know if it's appropriate for judges to start commenting about verbiage of section 208. It's not a verbiage, it's pretty short section. I mean, disparaging remarks against, it amounts to against Parliament who makes laws. Chale anyways. So that's the only reference. Ji. Allocation of symbol to... I must keep reminding you. Ji, kitna waqt aur? Sir, if I say 10 minutes, is that fine? 10 ही 10 होंगे. 10 ही होगा sir. 10 of my talking. Allocation of symbol to a political party is governed under Chapter 12 of the Election Act 2017. A political party who has complied with the provisions of Section 202, 206, 209. ये हम पढ़ चुके हैं. इसमें अगर आपको खास पॉइंट बताएं ना, वो हम अंडरलाइन कर लें. जी. line 5 पढ़ लेते हैं. पढ़ लिया जी. Line 5. The penal clause, i.e. subsection 5 of Section 215, envisaging for ineligibility to obtain an election symbol can be invoked only when a political party, despite a show cause notice, has failed to comply with the provisions of Section 209 or 210 of the Election Act. Section 209 only deals with the submission of documents and in no manner authorizes the ECP to question or adjudicate upon the validity of intra-party election. Indeed, it is settled law that a regulatory and penal provision in any law should be construed strictly. Penal statutes tending to deprive valuable rights of franchise should be strictly construed, and in case of doubt, benefit must go to the person against whom it is sought to be invoked. Disqualifying provisions in an act dealing with municipal election are penal provisions and therefore ought not to be extended beyond their legitimate limit. But at the same time, if there is any doubt, the court should be careful to see that the intention of the legislature in enacting the section is duly observed. AIR Calcutta Understanding Statutes by Essence of a page so and so. The combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. The perusal of the entire Election Act would certainly show that the ECP has no jurisdiction to conduct a roving inquiry into any matter, rather its jurisdiction is summary in nature. फिर वो आ गया केस की quotation बहादुर वाली, and then para 21. The outcome of the aforesaid discussion is that the impugned action of ECP denying election symbol to the petitioner has the effect of depriving the petitioners and its members to freely participate in the affairs and governance of Pakistan through political activities as guaranteed through Article 17(2) of the Constitution. Indeed, the Constitution 73 has ensured that every citizen in Pakistan has the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restriction. इससे तो कोई तो राय नहीं है. फिर वो quotations आ गई. We've already read the judgments, refer to them at least. And then the conclusion at page 23, I would like to read. G. Last 5 lines. The government of the political party so formed must implement the program of the political party which the electorate has mandated it to carry into effect. And now this. Will you agree with this? G. Hey, suppose you give a certain thing. Manifesto. So the government of the political party so far must implement the program of the political party. ये manifesto की बात नहीं, तो फिर ये क्या declaratory decree वो judgment दे रहे कि आपने whatever कह दिया अपने manifesto में आप उसको implement करेंगे. ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है. होना चाहिए सर, because manifestos हमारी political party होना चाहिए. It's like a wish, ना? God cannot direct. Suppose कल आप कहेंगे जी 16 साल के बच्चों को या उनको वोट का हक देना चाहिए. For instance, आपके manifesto में लिख दें, God can't direct you. Yes. Parliament can change laws if they want to. Correct. बिल्कुल सही. Any unlawful order which results in frustrating this activity by removing it from the office before completion of its normal tenure would therefore constitute an infringement of this fundamental right. उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे उन्होंने वो केसेस हम कोट कर चुके हैं ऑलरेडी, रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड देन द सिंपल कंक्लूजन दैट द जुरिसडिक्शन इज नॉट देयर.
So I would support this judgment. And आखिरी बात जो मैं करूंगा सर, because I have to conclude in 10 The minutes. only thing it may, except if I can speak on your behalf, except calling a provision of law absurd. जी, As a parliamentarian, you would not want that to. that can be changed. बाकी बिल्कुल ठीक है. चलें जी. अच्छा सर, बिफोर आई एंड एक दो जस्ट द कॉन्सेप्ट के एक जिसने कंडक्ट किया इलेक्शन उसने दुरुस्त कंडक्ट नहीं किया और उसकी वजह से सिंबल ले लिया गया. जस्ट द कॉन्सेप्ट एक केस था काफी पुराना, PLD 68 सुप्रीम कोर्ट. उसमें हुआ ये था कि बार काउंसिल्स के इलेक्शन कराने होते हैं एडवोकेट जनरल ने, वो चले गए रन ऑफ कच करने, आर्बिट्रेशन रन ऑफ कच की. सो ही वाज गोइंग टू बी अवे. तो कोई असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडिशनल थे, उन्होंने इलेक्शंस करा दिए ऑफ द बार काउंसिल. तो बहस हो गई कि कुछ झगड़ा हो गया बिटवीन द डिफरेंट कैंडिडेट्स ऑन द इलेक्शन. सो वन ऑफ द ग्राउंड्स टेकन वाज कि ये इलेक्शन जो जिसने कराया इज नॉट द एडवोकेट जनरल, ही इज समबडी एल्स. तो कोर्ट ने कहा कि शो अस द प्रेजुडिस दैट वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ हिम नॉट बीइंग द एडवोकेट जनरल. तो अगर वो प्रेजुडिस नहीं है तो देयर इज नो कनेक्शन और नेक्सस बिटवीन अस डिक्लेयरिंग दैट election as void or otherwise. Wouldn't those who wanted to contest, who've not been able to contest, aren't they prejudiced? किसी ने ये रेज नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट गलत होने की वजह से वी आर प्रेजुडिस्ड. Nobody raised that. नहीं, वो उनका तो और भी बुनियादी, वो तो कहते हैं हमें नॉमिनेशन नॉमिनेशन पेपर तक नहीं दिया तो हम इलेक्शन लड़ेंगे कैसे? जी, वो ये कहते हैं. उनका तो और भी बुनियादी. लेकिन मेरा भी मैं जो पॉइंट बना रहा था वो ये था कि nobody said कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो गलत थी और जो कंडक्ट किया वो गलत था. None of the people have said that. They've only said what your lordship is saying. शायद उनको पता भी ना हो ना कि आपने अंदर करा क्या. Correct. क्योंकि जब वो तो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं कि जी मुझे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दे रहा, अब उनको ये नहीं पता कि ये कागज तो बाद में आए ना कि ये कागज है वो कागज, उनको तो ये नहीं पता होंगी चीजें. शायद वो ऑब्जेक्शंस ले लेते. That point is conceded. But nonetheless the point being कि कोई prejudice on the face of it नहीं हुआ. और ये जजमेंट्स हैं, कुछ जजमेंट्स मैं कोट करना चाहूंगा जो लॉर्डशिप में से पॉइंट्स डिफरेंट थिंग. किस पॉइंट पे? इसी पॉइंट पे कि देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ डी फैक्टो, समथिंग हैपनिंग डी फैक्टो, कि अपॉइंटमेंट्स गलत भी हों तो जो ऑर्डर्स पास हो गए हों या एक्शंस हो गए हों वो नलिफाई नहीं होते. ये तो आपका कोई सरकारी ओहदा तो नहीं है ना? जी, आप वो प्रिंसिपल यहाँ कैसे वो इस तरह अप्लाई कर रहा हूँ कि इवन सरकारी ओहदे में, इवन सरकारी सिचुएशन में, इवन जहाँ जजेस अपॉइंट गलत हो जाएं और उनके जजमेंट्स को क्वेश्चन किया जाए तो ये कहा जाता है मलिक असद केस में तो प्रोटेक्टेड है. जी जी, अली असद वो वाला जो ज्यादा जजेस के वो जी वो फरजंद केस, फरजंद अली केस, असद अली केस, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस, वो तो सेटल्ड प्रिंसिपल है. तो वो अगर प्रिंसिपल आप देखें कि अगर आप पे कैसे लागू होगा ये प्रिंसिपल? वो इस तरह होगा कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये कह सकते हैं कि वो उसकी अपॉइंटमेंट गलत है तो उसके ऑफिशियल ऑर्डर्स और उसकी जो डिसीजंस हैं ठीक हैं, तो फिर एक प्राइवेट पार्टी में अगर एक बंदे को आप कह भी दें कि उसने गलत अपॉइंटमेंट हुआ है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो इलेक्शन को किस तरह अवॉइड कह सकते हैं? टू दैट एक्सटेंट इज माय आर्गुमेंट ऑन दिस. नहीं तो आप दोबारा कर ले इलेक्शन, मसला क्या है? सर सिंपल निकल गया ना. आई हैव नो इशू. अच्छा ओके, ऐसी आई हैव नो इशू. ठीक, चलें. अगर मुझे मिलता टाइम तो आई वुड डन इट, लेकिन वो सिंपल मींस आई एम चल बेसिकली चिलिंग. खत्म आई एम खत्म जी. I hope you're not खत्म. अच्छा, वो आए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बुलाएं उनको. तो गौर साहब किधर हैं? A very serious complaint has been made before us. This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately.
if heads need to roll, do so, whatever it is, whatever Mr. Gaur Ali, घर पे कौन था आपका? मेरी मिसेस थी, मेरा बेटा था, और वो आप फौरन उनके घर पे जाइए खुद, लॉर्डशिप, ठीक है? और क्या हुआ, अब यहाँ हम ये जरा फोकस नहीं हटाना चाहते हैं इस केस से, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी कंप्लेंट you submit it to us in writing. Sure, Your Honor. ठीक है? So this is very serious. Do you know what has happened or you don't know what has happened? Lordship, it's जो early. You know what has happened or not? Lordship, we have. It's a raid on. Too early to comment on that. We understand certain things have happened, and the police has gone to that place. And लेकिन जो details जो इनका जो मौक़िफ़ है, जैसे आपने नहीं, आप क्यों गए थे इनके घर पे, ये बताइए। लॉर्डशिप, जो अभी तक इतला आई है उसके मुताबिक जो पुलिस की एक पार्टी ने वहां पे रेड किया है, और they had the information of proclaimed offenders. कौन है proclaimed offender? ये डिटेल्स लॉर्डशिप इतने कम टाइम में एग्जैक्टली नाम मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जब गए हैं पता चला है कि ये बैरिस्टर साहब का घर है, so they were returned. No, मगर वो कौन है proclaimed offender? वो लॉर्डशिप उस थाने में लिखा भी होगा, जो ASI या जिस लेवल का ऑफिसर गया है, he must have that. कौन सा थाना है? कोसार। आप जाती तौर पे मालूमात कीजिए और फिर हमें राइटिंग में रिपोर्ट दीजिए, और एसोसिएट गौर साहब और his wife or whoever is at the home, आप तो यहाँ थे, आपको तो नहीं पता वहाँ क्या हुआ, ठीक है? This is a very serious matter. देखें, every citizen has to have full protection. ठीक है? You're not aware of it, but heads may roll. So आप जरा सा take personal attention of it. रेड हुई है नहीं हुई है? गौर साहब, would you like to go with him now or you want? हाँ, रेड हुई है जी यूर ऑनर। आप ऐसा करें कि आप इनको ले जाइए गौर साहब को अपने साथ, ठीक है, इन द सेंस कि उनसे इनको तो नहीं पता, आप इन्हीं के घर जाइए, आप खुद जाइए, गौर साहब को भी ले जाइए और मालूमात कीजिए, and if Gaur Sahib is not satisfied, then Hamid Khan Sahib, you can convey the thing or he can directly, so it would be better if आप कर लें, ठीक है? तो Lordship, anything else Gaur Sahib? That should be enough for now, Your Honor. तो आप ठीक है, please go along with the Inspector General. Sure, Your Honor. आप जाइए immediately, no other thing, this is the first priority order of business. Lordship. Thank you very much for coming into this. No, actually I didn't want your arguments to, because I wanted to first send for, I don't know what's happening, so I just wanted to tell the AG to send for the Inspector General of Police. Appreciate it, sir. No point telling the AG he won't know anything. Right. Thank you, sir. I've concluded, ma'am. नहीं, अच्छा, Mr. Makhdoom Ali Khan, where is he? अच्छा, जो बाकी 13 लोग हैं उनके लिए कोई वकील हैं या वो? हाँ? You only represent one. नंबर के लिए बुला लें। अच्छा, 5 लोग इन पर्सन हैं। अच्छा, sorry, आप, अच्छा, you wanted to add something, जी? Short submissions, but one thing for which I am extremely grateful that Your Lordship has taken cognizance of taken notice of what has happened during the course of the thing. This incident actually provides answers to 2 questions that have arisen here during the course of hearing. One was, हाँ साहब, थोड़ा सा इंतजार करें, let's see what happens. नहीं, वो अगर गौर साहब is not satisfied, we will take further action. Don't worry. केस को कुछ We have not taken any, मतलब, let's चलिए अब केस पे बात जनरल करें. परसेप्शन की बात नहीं, कर रहा हूं। केस पे बात करें. परसेप्शन ये है कि यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं करने दिया था। The 2 places इस्लामाबाद। हाँ साहब, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं। नहीं सर, बात तो मेरी कबूल कर लेने, उसका आप नोटिस ले रहे हैं, मेरा फर्ज है मैं आप तक पहुंचाऊं। Why we held the elections in Peshawar? Because the administration in Islamabad and Punjab
harass our workers. नहीं, मगर खान साहब आपकी बात अगर ये हम मान लेते हैं तो अगर आपकी बात ये बात है तो फिर आप सरकार को खत क्यों लिख रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन करा रहा हूँ पेशावर में, मुझे सिक्योरिटी दो? फिर तो आप चुपके से कराएं, इनको बताएं नहीं। तो एक तरफ तो आप बता भी रहे हैं ना, तो वो जरा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है उस बात में। इसलिए अल्टीमेट हम आपकी बात समझ गए, मगर फिर हमारा सवाल फिर आप जवाब दीजिए ना। अगर आपने कहा कि जी वो तो हमें इलेक्शन मीटिंग ही नहीं करने देते और हम चुपके से जाके अपनी मीटिंग कर ली, मगर फिर आप खत तो नहीं लिखते उनको क्या मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो? तो उन्होंने जवाब में लिख दिया भाई कहाँ कर रहे हो, हम आपको वहां सिक्योरिटी देते हैं। कोई यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते नहीं हैं। नहीं, मैंने कहा जब आपने जब बात की उसका मैं फिर सवाल बनता है उससे। जी 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 चलिए, we still have a duty to चलिए let's proceed with the notice to them. Secondly, we can't provide every remedy in the world, but we can attend to the case. जी, why did we choose the Peshawar High Court? दूसरा ये सवाल था, मैं अपने तौर पे जवाब जी जी। Because of our experience, so many hundreds of our workers, thousands of our workers, ladies have been picked up during the day. खान साहब, केस के लिए आपकी कोई वर्कर की तो जरूरत नहीं है, केस के लिए तो एक वकील की जरूरत है ना। अली जफर साहब तो खड़े भी हुए कल कोर्ट में, उन्होंने बात भी की, तो हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स पिकअप हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, मगर केस तो एकदम फाइल हो गया तो किसी को आने की तो जरूरत नहीं है कोर्ट में। सिर्फ वकील, या तो आप कहें जी वकील को नहीं जाने दिया, वो एक अलग बात है, किसी को आने की जरूरत नहीं है। जैसे आप आज खड़े हमारे सामने जी, आप 1000 वर्कर्स नहीं आए, वो आपकी मर्जी, मगर उनको आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आने की जरूरत है। मैं परसेप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाई वी प्रेफर, बिकॉज the most independent of the high courts we feel is still the Peshawar High Court, because their orders are being carried out. The orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. इधर से बेल मिलती है, वो बाहर निकलते हैं, साथ ही उनका डिटेंशन ऑर्डर में फिर अंदर कर दिया जाता। पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मगर ये देखें, बुनियादी आईनी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। एक लिस्ट आपने 5 मेंबर बेंच की बेंच बन गई। 5 मेंबर इज अ वेरी बिग बेंच फॉर अ हाई कोर्ट लाहौर, व्हिच यूजुअली इट्स 1 मेंबर सिंगल मेंबर बेंच। तो वही केस आप वापस ले लेते, फिर दूसरी बात है वो केस पेंडिंग उधर है, फिर आप लाहौर चले गए, इस्लाम पेशावर चले गए। इस बात समझ नहीं आ रही है ये बात। सर वो तो किसी एक इंडिविजुअल ने किया, पार्टी ने नहीं, वो वाला केस भी छोड़ दीजिए, वो भी मान लेते हैं, मगर वो जो WP जो वो क्या नंबर है उसका 81171 इसके लिए बनी थी, या 2023 इसके लिए बनी थी 5 मेंबर बेंच। वो वाला दूसरा फैसला आप जवाद हसन साहब की बात कर रहे हैं, वो सिंगल मेंबर था और इंटर कोर्ट अपील में वो अपहेल्ड हो गया है, हम उसको भी छोड़ देते हैं। हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, 5 मेंबर बेंच जजमेंट, जिसमें इलेक्शन ही का इशू था, लेकिन उसको प्रेस नहीं किया गया है। नहीं, अब आज भी जिंदा है, केस पेंडिंग पड़ा है। कल उसमें अली जफर साहब ने खुद कहा कि मैं अपीयर हुआ था, मगर बेंच डिड नॉट say that I moved an application withdrawing the petition or anything. But anyways, even if he does so now, the relevant date will be at the date of filing of the petition in the Peshawar High Court. Otherwise, देखिए हमें भी पता था, हम भी वकालत करते थे, कभी सोचते थे कि कभी इधर ज्यादा केस चल जाएगा या whatever, या जजेस का अप्रोच होता था, ये हम सब गुजरे स्टेज से, तो हम कोशिश करते थे कि भाई जुरिस्डिक्शन खींच के ले भी जाते थे कहीं और भी। देखिए we have all played this game, पर एक दफा इंतखाब कर लिया आपने जुरिस्डिक्शन का, कभी कभी हमने इस्लामाबाद में कर दिया, इंपोर्ट हो रही है कराची से, नहीं बिकॉज ये FBR इज बेस्ड इन इस्लामाबाद, हमने वो यूं बना ली जुरिस्डिक्शन। तो अगर आपने जब इंतखाब कर लिया फिर जाना मुझे नहीं समझ आता है, ये बात है। एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, मैं इसको ज्यादा डिटेल में टाइम नहीं लेना चाहता। I just wanted to inform you. Now, sir, I'm coming to the few propositions, in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if we may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind, always. I try my best not to be ever discourteous, sir. First proposition, first and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP, being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions.
that ECP, being a constitutional / statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions, cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court. Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I'm relying on 2 recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं, when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus. So let's see 185, does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, suppose someone challenges a judgment of the High Court, yes, and he may not be aggrieved, but he may say the judgment is wrong. May not so be, if he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185, but may I submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and its appellate jurisdiction is under Article 199. So, though the appeals or the petitions are filed under Article 185 clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199, because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. I was the petitioner, here they are the petitioners. But the question is, बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है आई हियर बाय अबॉलिश द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जजमेंट आ गया. Yes, another party aggrieved can come home. ECB can't come. अजीब सी बात नहीं होगी? या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि I don't like this member's face, I remove him. I mean, I'm giving you absurd example so the point can be appreciated. So ECP can't come, जी मेरे मेंबर को हटा दिया, unless it's a co-Toronto rate, तो अलग बात है. ठीक है, या हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो. जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में. जावेद हाशमी का जो केस है ना कल साइट हुआ है, ये जरा मुझे ज्यादा इसमें. But I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. जावेद हाशमी का केस These are very recent judgments. One is 2023 judgment. जो आपने हमें 2 दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ. जी, वो आप एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का. वो जी सर, हाँ, वो वाले हमने नोट कर लिए. उसके अलावा कोई बताना चाहिए? अच्छा, तो आपने पहले दिन बता दिया था. एक जजमेंट, इसके अलावा दूसरी PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 5-1. There is also now one more judgment. PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट. That PLD 2020 Supreme Court 586. ये वही वाला है, कल वाला है. वही 2 जज. हाँ, वो तो मैंने नोट किए हुए हैं. एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी. दूसरे केस में ओम्बड्समैन था. इलेक्शन पिटीशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास? इसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो कि आपकी तरफ से आगे आपके अगली पार्टी हो ही नहीं सकती. ड्रॉ पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है. व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू. एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है. दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए. उसकी कॉपी आपको दे दी. A recent judgment
authored by Your Lordship. Civil petition number 3532 of 2023. फुल मेंबर है। आप दे रहे हैं कॉपी? जी इसकी कॉपी नए वाले जो कह रहे हैं जो दे रहे थे ना ये बार-बार। अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट राइट टू इंफॉर्मेशन वाली, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये right of information वाला। मुख्तार अहमद अली वाला केस। हाँ, तो हमने दे दी अब इंफॉर्मेशन। नहीं तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर. दिस इज व्हाट हैज बीन, एज आई सी, हेल्ड इन दिस जजमेंट in para 9 of the judgment. May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता। Another 5 minutes I'll provide. पढ़ने जी सर, पढ़ने देता हूँ। पढ़ लीजिए। The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled rose out of the recommendation of the disciplinary committee. Therefore, it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined in the Civil Servants Act 1973. Therefore, the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these two cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the journalist neither case had discussed this aspect. So meaning thereby the institution of the Supreme Court through registrar cannot be a petitioner. This is as I read this judgment about. I'll just there is another thing. Na? The other thing is a superior court. Registrar means the superior court is before the high court. So here it's not an hierarchy of Election Commission of Pakistan. I mean, it's a separate constitutional body. So they get a judgment. They cannot appeal it. It's very strange. Either then you say then they can't be sued either. If they can sue, they can also defend. No, you can sue but you can't defend. ये क्या बात हुई? No, defend before the court, but you cannot be appellant because ये मुझे इसकी logic नहीं समझ आ रही. Institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is not for the parties. अगर कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास किया कि अपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो, तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया, आपने चैलेंज भी नहीं किया. तो मतलब ये नहीं, हम ऐसा सिचुएशन, सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस. देखें, आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट, व्हिच इंक्लूड्स the Election Commission of Pakistan. If Parliament enacts unconstitutional laws, we will strike them down. If they do anything unconstitutional, we will set that aside. But otherwise, let everybody operate, empower them to operate within their domain. So, ये तो की बात नहीं कि High Court cannot make a mistake. They pass an order again, which is, and they say cut off your hand, you can't go.
तो फिर हम ये भी कह सकते हैं आप पिटिशन ही नहीं फाइल कर सकते थे। सर देखिए वो आपको किसने राइट दिया पिटिशन? मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो इस केस में भी सर्विस ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी रादर ए constitutional body under Article 212. Their decision was being challenged before the Supreme Court by the Supreme Registrar. It was held, no, we can't do that because we are not there to. चलिए आपका पॉइंट मैंने सुन तो लिया मगर I don't agree with it. Let me be so straightforward and say it. But there can be always situations where I can say that exceptions can be made. I'm not saying ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सबऑर्डिनेट कोई बॉडी होती है, हाई कोर्ट खुद चैलेंज कर रहा है अपना जजमेंट, वो आपकी बात सही है कि भाई आपको क्या फिक्र है, आपने तो फैसला कर लिया, आप अपना जजमेंट क्यों चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल जी ठीक है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है इसी का जी। बिफोर द 18th अमेंडमेंट before the 18th amendment, let me tell you something which may be good news or it may be bad news for you. हमें बताया गया इलेक्शन कमीशन has extended the time till 7 PM today for allotment of election symbols. तो जरा सा तेजी करते हैं। उसमें मैं एक गुजारिश करूंगा कि इसको अगर जनाब एक के लिए उनको because the thing is आप अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें, हम इसको फैसला करें। मैं उसके एंड पर बात करूंगा। मैं इसलिए आखिर में सर इसमें गुजारिश ये थी कि 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 17 में एक शिक थी आर्टिकल 17, उसमें 4 क्लॉजेस होती थी आर्टिकल 17 के। पढ़ ली 17th prior to 2010. Every political party shall, subject to law, hold intra-party elections to elect its office bearers and party leaders. ये आप पढ़ना चाह रहे हैं ना? जी वही। अब ये खत्म हो गई है। Every political party shall, subject to law, hold intra-party election to elect its office bearers and party leaders. Now this was omitted. Yes, under the 18th but it was brought back by 207 Elections Act. Yes, अब वो election act के तहत। Why I'm quoting this example? As you lordship were pleased to observe yesterday that it is a constitutional body. I'm submitting that after 2010, it is only exercising functions under a statute, not under the constitution. So it is a statutory body for all intents and purposes. So therefore, while interpreting the Election Act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because Constitution does not require holding of inter-party elections after 2010. Now this is all under the Election Act or previously under the Political Parties Order of 2002. So therefore my submission would be that ECP, for the purpose of the intra-party election, is now a statutory body performing statutory functions, and therefore these two judgments which pertain to statutory bodies, whether as ombudsman or whether as a competition commission, they are at par with that of Election Commission of Pakistan, exercising this function of regulating the पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है हामिद साहब, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ईसीपी के पास कोई राइट ही नहीं है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में बात करने का, देखने का। वो एक उनके सेक्शंस में है, तो अगर वो इसको चैलेंज नहीं करते तो उनके खिलाफ वो जजमेंट होता तो वो तो लॉ ही इनफेक्टिव हो जाता ना बात के लिए। देखिए वो एक और एस्पेक्ट है, बिल्कुल एंड वेरी एबली आर्ग्यूड बाय मिस्टर अली कि it has no jurisdiction, but the question is whether ECP as a constitutional body is any different to other statutory bodies in this regard, in this respect, only in this
respect, where it is only exercising statutory function and statutory law. So therefore, my submission is, for all intents and purposes, the election ECP performing functions under the Election Act is a statutory body, and has same law applies to it as that of Competition Commission or Ombudsman. Now the next submission is, we see Article 219 of the Constitution. Article 219 provides for various functions to be performed by the Election Commission of Pakistan. If your Lordship kindly consider Article 219. मेरी Article 219, the Commission. हमने कई दफा पढ़ लिया, हाँ पॉइंट बताएं. This is the next point is that Article 219 provides for various functions to be performed by Election Commission. वो ई पे रिलाई कर रहे हैं. जी सर. अब इसमें यही मैंने कहना था कि ये जो पहले 3-4 क्लॉजेस हैं उसमें डायरेक्टली उसको फंक्शन ये हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ई में कहा गया है such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura, Parliament, meaning thereby the functions the ECP performs and with regard to matters of regulation of political parties, they do not fall within the first 4 clauses, fall within after an act of Parliament as a statutory body, it is performing that function. So under Article 219, any act of 220 भी पढ़ लें. हम ECP की कदर नहीं कर रहे हैं. प्रोवाइजो नहीं 220 पढ़िए. आर्टिकल 220. It shall be the duty of all executive authorities in the Federation and the provinces to assist the Commissioner and the Election Commission in the discharge of his or their functions. ये पावर सिर्फ एक और इदारे को है, वो सुप्रीम कोर्ट है. आप उधर आ जाइए आर्टिकल 190 में. All executive and judicial throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. तो सुप्रीम इनको इतना ज्यादा इख्तियार दे दिया कि all executive authorities in the federation and the provinces. ठीक है, तो you can't, I mean, IG पुलिस नहीं कह सकता है कि मैं भी तो स्टैट्यूट के जरिए हूँ, आप भी स्टैट्यूट के जरिए हैं, सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुनता. उसको सुनना लाजमी है. इसका लिमिटेड आर्गुमेंट का एक लिमिटेड फोकस है. मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ whether the powers being exercised by Election Commission with regard to regulation of political parties, is that under E or A to D? My submission is under A, Act of Parliament. Correct. Under E. There's no debate on this. Ji. As such, 220 is not with regard to functions, is with regard to... But I'm just showing you the importance of this body. Of course, it's not with regard to it, but it has got, even the High Court can't say this, what 220 says. But only the Supreme Court can do some of it. But they are differently worded. Let me read 190 and 220. पढ़ लिया हमने, हम आपको बता रहे थे कि 220 में देखें, it shall be the duty. All executive and judicial authorities throughout. हमारे पास it shall be the duty के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुए. Yeah. चलिए कंपेयर ना करें, मगर हम ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत इख्तियार हैं.
बेशक, क्योंकि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही तब सकती है। इसमें कहीं फ्री एंड फेयर की जिक्र नहीं है, एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, इनके इख्तियारात की बात हो रही है इधर। Yes, it can be. Yes, I'm not disputing that. 220 is an important article of the Constitution. अगर ये आपके आर्गुमेंट को तो चिजल अवे योर आर्गुमेंट। नहीं, अब बात सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत एक सिचुएशन में क्या है और दूसरी सिचुएशन में क्या है। कुछ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिचुएशन में है A to D, बट E में it transforms itself into a statutory body by acting under statute. Still, it must have all the powers. I'm not disputing that, because without having all those powers, it may not be able to carry out its functions. High Court passes a rate, do not exercise powers. वो कहेंगे हम बैठ जाएं घर में बैठे, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑर्डर को। ये तो doesn't stand to logic at all. Why? नहीं, चलिए आप दूसरा पॉइंट बताएं ना। ये मुझे I can't, ये आप पहले कल भी यही बात कर चुके थे, मगर I can't agree. If I agree with you, then I completely undermine the status and the constitutionality of the Election Commission of Pakistan. No, sir, I'm not undermining that. I'm only referring to this to show that these two judgments which pertain to statutory bodies will apply to ECP as a statutory body. That is the argument. Limited argument. नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। Limited argument. नहीं, आगे बढ़े ना, नोट कर लिया ना। So that's it. Well, next has been already argued by Mr. But I will show that ECP in its conduct and proceedings have clearly been discriminatory towards Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI. It has exercised double standards. How do I say it has exercised double standards? I'll draw your lordship's attention. ये कह चुके हैं पेजेस। जफर साहब ये बात आर्ग्यू नहीं कर चुके हैं? Partly argued that. Yes. मैं आपके जुरिडिक्शन में जा रहा हूँ। आप अपने दूध में। Partly argued that, but I'm just trying to fortify that argument by referring to these pages, particular pages, page 314 to 316. Kindly consider part 2 of the paper book. Pages 314 to 316 are results of the intra-party elections of PMLN. Pages 318 to 322. ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट आपने पिटिशन में कौन सी ग्राउंड में, कौन से नंबर में लिया है? इसमें पिटिशन में अपनी पेशावर हाई कोर्ट की पिटिशन में there we have clearly taken the position वो बताएं ना, वो वाला ग्राउंड कौन सा है आपका? grounds before the Peshawar High Court. खुद ECP ने लगाए हैं, उन्होंने खुद ही लगाए। हाँ, वो तो ये आपने आर्टिकल 17 की तो बात की है, आर्टिकल 25 की बात आपने कौन से पैराग्राफ में की है? डिस्क्रिमिनेशन का होगा ये। और जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का कुछ जिक्र नहीं है। जजमेंट में तो उन्होंने फैक्ट्स को टच ही नहीं किया ना। नहीं, जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का तस्करा नहीं है, और मुझे आपकी पिटिशन में सरसरी तौर पे मैंने देखा आपने डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया नहीं है। हो सकता है कहीं लिया, मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप वो पॉइंट ना आर्ग्यू करें जो कि ना तो आपने लिया ना हाई कोर्ट ने उस पर फाइंडिंग दी। नहीं, कई चीजें जो हैं सर, दिस इज ग्राउंड W on page 49. 49 page 49. ग्राउंड W आप पढ़ लें। और of the first paper book 1. May I read it out? That it is vehemently submitted
that PTI has been discriminated against all other political parties who follow less onerous processes of holding intra-party elections in accordance with their own constitution. There are 175 political parties. ECP never examined a single political party like PTI or at all. This is itself violation of the due process of law and violation of the fundamental rights of the petitioner, including the rights protected under Article 4, 9, 10A, 11, 17 and 25. अब आप इसको सपोर्ट करें ना, आपने कोई देखें फिर आपको नहीं एक सेकंड ये जो नहीं एक सेकंड है ये ना जी जी फिर आपको इन सब पार्टीज को रिस्पोंडेंट बनाना चाहिए था पहली बात, फिर आपको हर पार्टी का केस अलग अलग लिखना चाहिए था। एक फ्लीटिंग स्टेटमेंट से देखिए, अब हम भाई 2021 में तो आप सरकार में थे, तो आपके पीछे ये क्यों दौड़ रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें? वो तो सबको कह रहे थे इलेक्शन करवा लो। अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, परसों हमने केस चलाया है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने उड़ा दी, ठीक है, उसका वजूद ही खत्म कर दिया, और ये कह रहे हैं कि 13 और को हमने खत्म कर दिया है। तो ये तो नहीं कि आप ही पे ये कह रहे हैं, आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं इलेक्शन कराएं और कुछ नहीं कह रहे हैं। सर वो अपनी जगह, लेकिन तो ये आप कहना कि डिस्क्रिमिनेटरी है, तो कैसे आप कह सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए 3 और पॉलिटिकल पार्टीज जिसका रिकॉर्ड यहां पर पिटीशनर ने लगाया है, उन्होंने ये शो किया है कि जितने ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट हुए हैं सारे अनअपोज हुए हैं। इसलिए जनाब भाई कोई कंप्लेंट करे या खुद नोटिस ले लें? सर बात ये है, ये ईसीपी पिक एंड चूज, कंप्लेनेंट तो हमेशा मिल जाता है और कंप्लेनेंट यहाँ भी कहीं से हासिल किया गया, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ जनाब को डिस्क्रिमिनेशन का देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इतने हल्के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, डिस्क्रिमिनेशन आपने कह दिया तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना, नहीं कहने से, लेकिन ये कुछ थोड़ा तो आप हमें दिखाएंगे ना भाई। आप ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया आपने जब 2021 में आपने उन्होंने आपको नोटिस दी कि मेरे इलेक्शन के पीछे क्यों पड़े हो, बाकी इलेक्शन से भी करवाओ उनसे, बिल्कुल सही नहीं लिया। आपने कहा जी कोविड-19 ने मुझे मोहलत दे दें साल की, उन्होंने कहा चलें जी साल दे दिया आपको। तो यहाँ से तो पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने 2021 में इलेक्शन कराए, इंटर पार्टी इलेक्शन, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है नोटिस ले लिया और उसमें स्ट्राइक डाउन। आपको भी पता है अभी देखिए इलेक्शन, ये जो मैटर है आपकी अपनी पार्टी से आवाजें उठ रही है ना, बाहर से उठ रही होती है तो हम कुछ बात नहीं करते। बात ये है, अब वो वजूदीन साहब कौन से इलेक्शन करवा रहे थे, कौन सा साल था वो, कितना बड़ा झगड़ा हो गया था? जी वो एक्चुअली मैंने ही कराए थे। उसके बाद एज ट्राइब्यूनल उन्होंने नोटिस लिया था जिसमें 3-4 नहीं, वो कौन से इलेक्शन से? ये इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं, कब की बात है वो? ये 2012-13। तो देखिए ये कोई बाहर के लोग तो कोई उंगली नहीं रख रहा है ना कि ईसीपी ने तो आके नहीं कहा वजूदीन साहब को कि आप ये गलत हो गया वो गलत हो गया। हम इसी के पास नहीं गए थे, हम उस ईसीपी की कोई इस मामले में नहीं, तो वो फिर खुद छोड़ के चले गए कि नाराज हो गए, क्या हो गया, वो हुआ था क्या उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो इज अनदर स्टोरी। बट आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ, देखिए सम व्हेन यू रेज bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. Let them contest elections. यही मैं कह रहा हूँ, ये इंटरनल मैटर है पार्टी का। पार्टी कोई चीज नहीं होती, पार्टी means the people. Very rightly argued. देखिए, sorry, party means the people. I don't differentiate between party and the people or the members of the party. उसके तो इंटरनल प्रोसेसेस है, उनको करने दें। आप ईसीपी का क्या काम है कि उसमें इंटरफेयर करें? वो ये राइटली कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो, बस ये नहीं कह रहे हैं कैसे कराओ। हाँ, ये उसके पास उन्होंने कहीं लिखा कि इस तरीके से कराओ। पेशावर के जजमेंट को कहीं उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी को टच नहीं किया, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये रैम है ये ऑर्डर, क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई होगा कि वो अंदर से इंट्रा पार्टी को ईसीपी देख नहीं सकती। इन व्यू ऑफ दिस जजमेंट, इट इज जजमेंट इन रैम इन माय व्यू, इट्स नॉट पर्सोनल।
उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ईसीपी बात नहीं करेगी। तो वो तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द जजमेंट इज पास द लॉ हैज बिकम चेंज। वो जो सेक्शंस हैं और फिर वो खुद कह रहे हैं कि 215 217 के तहत इनको इलेक्शन लड़ने दो। तो दैट वाज द 215 जिसके अंदर शो कॉज दी गई, वो पूरा केस चला है इसका 215 में। जी वो जो 2017 के लॉ के ये तो इसका आप देखिए, अब आइंदा कोई पार्टी इलेक्शन कराएगी नहीं जी, इवन डमी इलेक्शन भी नहीं कराएगी। क्या करेंगे, खत्म हो गया है, पिशावर हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। इलेक्शन क्वेश्चन इज वेदर ए पार्टी इज। नहीं, वैसे मुझे एक देखिए बुनियादी सवाल ये है हामिद खान साहब जी, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ योर ओन मेंबर्स? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? आ जाओ बाबा, मैदान में उतरो, लड़ो, देखो कितने पॉपुलर हो, 4 वोट नहीं मिलेंगे तुम्हें। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसका जवाब तो अली जफर साहब ने पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है कि ये वक्त पे पहुंचे ही नहीं। कह रहे हमारे दरवाजे तो खोद दें कि नॉमिनेशन पेपर दे दें, फिर हम क्या करें उसके साथ? नॉमिनेशन पेपर आफ्टर होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन पेपर ही दाखिल ना करूं तो मैं बाद में ग्रीवेंस हो सकता है मेरा कि मैं इलेक्शन में, अगर आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते तो बहुत उम्दा इलेक्शन होता। ग्रीवेंस हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। इन दिस केस Mr. Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. ये होल्ड एक एस्पेक्ट है। हामिद साहब पेज 20 पे आप जरा सा प्लीज देखिए, पेज 20 पे पेशावर की जजमेंट में द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party। तो ये तो इन रैम है, ये सबके लिए हो गया, ये आज के बाद खत्म। आज की बात सब पार्टी जो कब्जे में जिस पार्टी के, वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, मेरा कब्जा रहेगा। ये खत्म ही हो गया ना पॉलिटिकल पार्टी को। अब ईसीपी आज के बाद इलेक्शन क्यों करें, पाकिस्तान में क्यों इलेक्शन? अगर ये बात है, ये जो पिशावर हाई कोर्ट ने कहा है basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. तो फिर वो 215 को चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन कर रहा है, वायरिस खत्म करा दें उसकी 215 की। Then in future no political party will be subject to the inter-party election. The law it says and the varies are challenged and strike down by any court of law under Article 199. ये नहीं कहा सर, मैं अर्ज करूं, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑटोनमस बॉडी है, ये इलेक्शन अंदर से अपने इंटरनल इलेक्शंस कराते हैं, इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देना होता है। जिस तरह चलिए ये बातें हो चुकी हैं, कोई नई बात करें ना जी। अभी भी नॉट, मैंने लिखना छोड़ दिया। ये नई बात होती है, मैं जरूर लिखता हूँ। 3 डॉक्यूमेंट्स जी जी सर। एक आज डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में तो जो आपकी दुआ, इलेक्शन कमीशन ने आज एक फैसला दिया है, ये प्रोवाइड कर दें कॉपीज प्लीज। ये बड़ा क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है सर, अगर इसको देखिएगा जी। ये देखिए, एक पार्टी हमारे सामने नहीं है, आप बेशक चैलेंज कर लें, आप बेशक उस पार्टी के खिलाफ कर दें। देखिए ये उनको फाइन लगा दिया है, उन्होंने इलेक्शन दे दिया है कि ये क्या करें हम? उनको दे दिया राइटली सो। देखिए अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, हमारे साथ क्यों गलत। हम एक और बात कर लेते हैं जी। मर्डर इज अ क्राइम, मर्डर इज अ क्राइम नो डाउट जी। एक मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, कहते हैं मैं नहीं रजिस्टर करता हूँ एफआईआर। एक और मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, फॉरेन रजिस्टर कर लेता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनेगा इस ग्राउंड पे। कंप्लायंस विद द लॉ कांट बी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी। देखिए, if the law, you can say this law is discriminatory. If at one time, let's even go along with your argument, Election Commission of Pakistan gives a favor to somebody and doesn't do anything, then you call upon the courts to make it comply with the law. You can't say, since that murder was overlooked by this SHO, the other murder in that mohalla should have also been overlooked. या तो कहीं ये crime नहीं है, वो एक अलग बात है। तो I'm giving these very basic things. It will not create a right in you.
you can take action against the ECP and say why are you doing this, or take action against that party के जी देखें इन पे तो हाथ हल्का रखा है, मगर अगर कानून उनको ये काम की इजाजत देता है वो आप उस पे फोकस कीजिए ना। डिस्क्रिमिनेटरी, ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं बनेगा है, लेकिन मैं अर्ज करूं एक बेसिक प्रोपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, देयर कैन बी अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ struck down on that account. There can be a law which is not discriminatory ex officio, but is exercised in a discriminatory manner. Correct. That is equally bad. Correct. Agreed. Article 25 की equal protection. यहाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जिस लॉ के तहत ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी मैनर है, यानी एक पार्टी को तो वो कहते हैं ये सिंबल आपको दे दिया, आपको सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा में 20,000 रुपए दे दिए। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। जब इन्होंने आपको 2021 में नोटिस दी थी और फिर 1 साल बढ़ा दिया था, एनपी कहेगी आप पे 2 लाख रुपए का फाइन क्यों नहीं लगाया? नहीं, देखिए ना, उधर तो डिस्क्रिमिनेशन आपके फेवर में हो गया ना। जब 2021 में आपको नोटिस दी इलेक्शन कराओ, आपने कहा जी कोविड 1 साल की मोहलत दे दें, उन्होंने कहा चलें जी, उधर उन्हें कोई बगैर फाइन के आपको कर दिया, फिर आप ये भी एनपी कर कि वहां तो उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके फेवर में कर दिया। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, मगर देखिए आपके अपने कॉन्सिक्वेंस, आपका मसला ये हो रहा है ना, ये आपके पीछे पड़े कब से इलेक्शन की खातिर, आज की बात नहीं है, जब आपकी अपनी हुकूमत थी ना। अब आज की बात होती है, आप कहते देखें सेटअप चेंज हो गया या पीडीएम आ गए या कैटेगरीज आ गए, हमें तंग कर रहे हैं, मगर ये जब आपकी अपनी हुकूमत थी उस वक्त से ये कह रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, और आपने तस्लीम कर लिया मैंने नहीं करा है, मुझे वक्त हमें टाइम दे दें। हाँ ठीक, तो उधर आपने ये कोई बात नहीं की कि डिस्क्रिमिनेशन है कुछ, और आपको थ्रेट भी दे रहे हैं, अगर आपने नहीं किया मैं आपका इलेक्शन सिंबल ले लूंगा। सर वो अगर एक ऑर्डर पास किया है वो डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर नहीं था, मगर आप लीगल बात करें ना, आपने कहा ये तो आप सब फैक्ट्स में जा रहे हैं। नहीं, मैं तो फिर एक्सरसाइजिंग पावर्स इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, नहीं अगर आपने अलाउ कर दिया इलेक्शन सिंबल हमें क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा यू विल अटेंड टू सम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स व्हिच आई एम नॉट हियरिंग। द पॉइंट इज दैट दे आर नॉट ट्रीटिंग ऑल पार्टीज इक्वली। वो हमें वी गॉट इट, आगे बढ़ते हैं जी। सो ये मेरा कम से कम पॉइंट नोट फरमाइएगा, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट पार्टी नॉट इक्वली and in a discriminatory manner. One of the examples is that one of the political parties has not held intra-party election, has been given time till May to hold it, and they have also been given election symbol. Why not the same treatment to us? Not it. Yes. As a matter of interest, are you contesting elections this time? आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, आप नहीं, मैं तो नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरा पर्सनली लड़ने के इसमें कोई नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। I'm too old to do that physical exercise. Because the last one you contested, that's why I wanted to know. मैं एक दफा contest किया है, and that was stolen from me. I had won that. No, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे। थोड़ी वो बात, मैं इसलिए बात वो अपनी पर्सनल ये नहीं बात करता। मैं चला next submission. Now, sir, the way the intra-party elections, they have interpreted as if it is a mandatory provision. It is there in the Election Act, but it is not. My submission is not a mandatory provision. On this, I rely on 2 judgments already relied upon by Mr. Ali Zafar. ये कवर हो चुका है ना ग्राउंड, इंटर पार्टी इलेक्शन, वो उन्होंने भी ये बात की है, नॉट मैंडेटरी जी। That provision is not a mandatory provision, and a party cannot be made to suffer or made to be thrown out of election process on that account. This Article 17 is the one that will prevail over any provision of the ordinary law. Correct. So therefore I am relying on both the judgments which have been elaborately read out before your lordship. PLD 1989 Supreme Court 66, Benazir Bhutto's case. Then the other is PLD 1993 Supreme Court 473 Mian Nawaz Sharif's case.
yesterday during the course of argument that before the Peshawar High Court, we did not seek declaration that we have held the elections correctly in a valid manner. My submission is, this is one of the objections they have taken. My submission is, my petition under Article 199 is not with regard to seeking a declaration. It is with regard to praying before the court that we have held the elections and the EC's interference is something which may be declared as without lawful authority of no legal effect. In this regard, I'll read Article 199. What do we seek in certiorari? So this is Article 199 1B. डिक्लेरेशन तो आपने मांगा है ना, आपने कहा इम्प्यून जजमेंट को डिक्लेयर करें इलीगली। ईसीपी के जजमेंट को या ऑर्डर को आपने डिक्लेरेशन तो सीख की है पेशावर हाई कोर्ट से कि इसको इलीगल डिक्लेयर करें। तो डिक्लेरेशन तो मांगा है आपने, आप कह रहे हैं हमने डिक्लेरेशन नहीं मांगा। जी हाँ सर, इट्स अ सेटल्ड लॉ दैट यस वी सी